Hello, everyone. Good morning. We are already live, and I can see some very good of students already joining the session. Good morning, Pallavi. Good morning, Prithvi. Good morning, Rajendra. Veena Pusa, Nivedita. Raghavendra, Nikita, Mritika, Yash Pathak, Tanya, Aruna. Good morning, everyone. ओके सो आई कैन सी कि थोड़े से जोश वोट्स में कम भी है. Let's wait for the students to join and we will start the session. First of all, I'll give you guidance about what is it going to be. क्या करना है, कैसे करना है, how the session will proceed. And please don't comment for the language that ma'am, please take in English or please take in Hindi. I have both set of students to cater to. So leave it to me that how I am going to deal with this session. Of course, जिनको भी ठीक लगे, जिनको भी अच्छा लगे, they can continue the session. It will be a mix of Hindi and English both with maximum English. Okay. Yes, good morning, everyone. So we already have around 130 students. चलिए, good morning, everyone. The PDF hasn't been shared. ऐसा कुछ बच्चे बोल रहे हैं. I will ask the team to share in a while. Don't worry about that. Harish, the session hasn't even started yet. It is about to start. So don't worry, you are here at the right time and the right moment. Good morning everyone. अब फटाफट से पहला आंसर जो मुझे बच्चे देने वाले हैं. I have 180 students right now with me, and the first answer that you are going to give me is, how is your preparation? Hello everyone. The first question that I've asked you is, how is your preparation? एकदम पैनिक नहीं करना है, एकदम परेशान नहीं होना है. You don't have to worry about कि मैम ये कम टाइम है, ऐसा है वैसा है, क्या करना है क्या. Just stay with me. So you are here with me for about 2 to 3 hours. So stay with me and I'll guide you in the best possible manner. Okay, so just relax your mind a bit. We are here for some interactive sessions. We are here for the benefit of your own examination. Okay, so don't worry about it. थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं. आई नो यू हैव बीन कंटिन्यूसली स्टडिंग, सो यू कैन रिलैक्स योर माइंड अ बिट. नॉट सो गुड, गुड, नॉट सो गुड, ग्रेट. अरे चलो, बिकॉज ऑफ यू नो फ्योर एग्जाम. गुड गुड गुड. लाइक वाइक नहीं हो रहे हैं क्या वीडियो पे? देर आर 220 स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग एंड ओनली 73 लाइक्स दैट आई कैन सी. फटाफट से वीडियो लाइक करिए बिकॉज आई हैव अनदर सरप्राइज फॉर यू. आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, बट देन यू ऑल्सो नीड टू डू समथिंग. सी, कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? You have अच्छा, भावना बोल रही हैं that she has some doubts regarding amendments. The videos, the amendment videos are already uploaded on YouTube. तो आप वो देख सकते हो. If you don't have the time तो आप उसकी PDF डाउनलोड करके सिर्फ उससे रिव्यू कर सकते हो भावना. And still if you have doubt तो you drop in the comment कि क्या है. I'll see how can I respond to that. Okay. After watching your videos, I'm confident about this paper. Great to hear that, Himanshu. आकाश को कल ही से एग्जाम की लीव मिली है. नाउ आई विल नॉट स्टार्ट माई स्टडी टिल. अच्छा, अभी तक आपने शुरू नहीं की है, बट देन यू हैव टू स्टार्ट. वेरी मच स्ट्रेस, आई कैन अंडरस्टैंड. सी, एक बात मैं बोलूंगी और मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनना. विल स्टार्ट द सेशन सून, डोंट वरी. 5-10 minutes will hardly matter. I'm saying to you one very 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 important and a deep line. जो समझ पाए वो समझ पाए. बहुत ध्यान से सुनना. If you fail to prepare now, if you fail to prepare now, trust me, you are preparing to fail. It depends on you. अगर आपने मान रखा है कि मैं तो फेल होने के लिए एग्जाम देने जा रहा हूँ, then go ahead, don't study at all. और मेक एक्सक्यूजेस कि मैम ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा है वैसा है, मेरा ये दूर है, ऐसा. डोंट मेक ऑल दोज एक्सक्यूजेस. Now, what is the situation? You have to accept that situation. Whatever preparation you have done so far, you have to accept that preparation and make the best use of the remaining time. ठीक है? तो preparation आपकी अभी तक कैसी भी चल रही थी, I really don't care. I am here to support you completely, but
एक प्रॉमिस सब स्टूडेंट्स को मुझसे करना है अभी के अभी, कि अब आपकी जो प्रिपरेशन होगी फॉर द रिमेनिंग टेन्योर बिफोर योर एग्जाम्स इज गोइंग टू बी सुपर 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 ऑसम. कुछ भी अगर लगता है अरे मैम ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, जस्ट गेट इनटू दैट. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही बहुत ज्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट कर दो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, नो, बट फाइट योर ओन फियर्स. कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन ऑफ योर रीडिंग कि हाँ लॉ है, इतना सारा है, हमने बस ये पढ़ा है ना, इसी को रिवाइज कर लेते. यू नेवर नो व्हाट क्वेश्चन इज गोइंग टू कम इन द एग्जामिनेशन. इवन व्हेन आई एम सिटिंग हियर विद अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई कैन नॉट गारंटी दैट, राइट? व्हाई हैव यू स्टॉप, ललित? किसी को भी अपनी प्रिपरेशन को स्टॉप नहीं करना है. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. I will repeat the line again. If you fail to prepare now, trust me, you are preparing to fail. उसके बाद फिर आके excuses मत बनाना और ये नहीं बोलना कि अरे मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ, उस वजह से नहीं हुआ. No, absolutely no. Okay, चलो. Now, I hope you all can see something on my screen. भाई स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? स्क्रीन पे दिख रहे हैं कुछ important topics, important sections, right? Chapter wise. So, before I begin with the session, I want to tell you certain things. आप सबको अपना paper pattern पता है, so you know that you have 4 sections. The very first one will be MCQ, right? And considering the online pattern, I can be 90% sure कि आपके जो questions आने वाले हैं, they are going to involve less of case studies and more of direct questions, right? Not just my own conscience or inner instinct, no, but whatever we have analyzed so far from the MTPs, whatever we have analyzed from the past attempt papers, we are clear कि हमारे ज़्यादातर direct questions आने वाले हैं. And in case of direct questions, more than the presentation, I would say, it is important that you should know the concept. And keeping the online pattern in my mind, I have designed this list of important terms, important sections basically. Like if I talk in producer company, directors, quorum, voting rights, ये जो छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं, इस पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. सो व्हेन यू आर रिव्यूइंग चैप्टर नंबर 1, कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्शन, दिस is something that you must not miss out. These are the sections which you should keep in mind. ठीक है, सेक्शन नंबर्स. तो मैंने ऐसे चैप्टर वाइज कुछ लिस्ट बनाई है बहुत एफर्ट डाल के फॉर यू ऑल, बट आई नो दिस इज नॉट अवेलेबल विद यू राइट नाउ. उसके लिए आप लोगों को भी कुछ करना है. फटाफट से लाइक्स दो, राइट? वंस आई हैव हियर 350 लाइक्स एटलीस्ट, तो फिर we will share the PDF with you. The PDF might be shared by evening, but it will be shared with you. The reason for sharing this PDF a little late is because I don't want the students to resort to selective studies. ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जब आप अपनी प्रिपरेशन करें तो आप पूरा करिकुलम, पूरा सिलेबस को इंक्लूड करके you do your preparation, and after that when you are reviewing, I want you to ensure कि ये चीज़ें आपसे मिस आउट नहीं हुई हैं. ओके, आई होप दैट्स क्लियर. A thumbs up अगर बात समझ में आई तो. Come on everyone. Okay, Sai is asking, ma'am, tell us how to handle case laws. Well, I'll tell you, Sai Kumar, at the end how to handle case laws, because right now, considering the online pattern, I don't consider it very important to be taking it at the peak hour. You stay with me till the end, and once the session is over, I'll tell you how to deal with the case laws as well. Okay? Fine. As per supplementary issue, there are some chapters that are not in CMA study material. देखो भावना, you get confused on certain matters. देखो institute ऐसे लिख देता है revival, the chapter is not there. Winding up, the provisions are no more there after IBC. But students get confused. जो आपका voluntary winding up का part है वो हटाए, बाकी winding up आपका है, right? तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा वाइंडिंग अप हट गया है. इट इज़ वेरी वेल देयर. सो जो मैंने आपको बताया है ना भावना, इफ यू आर माई रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, यू कनेक्ट टू मी पर्सनली, देयर इज एब्सोल्युटली एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. एक भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं है.
तो इफ यू हैव एनी डाउट यू कनेक्ट टू मी पर्सनली, आप व्हाट्सएप करो मुझे एंड आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली कि क्या छोड़ सकते हैं क्या नहीं छोड़ सकते. ओके चलो, much needed. Great, great, great. Thank you, ma'am, so much. Okay, I can see a lot of thumbs up. So all my students are charged up and their brains are open क्योंकि सब अच्छे से समझ में आ रहा है. The Josh is quite high but a little low as well after completion of around 295 votes. दिख रहा है मुझे कि 86% स्टूडेंट्स का जोश थोड़ा हाई है, बट हाँ 13% स्टूडेंट्स मेरे साथ ऐसे भी बैठे जिनको मुझे अभी मोटिवेट करके ना थोड़ा सा उनका जोश टुवर्ड्स द एंड हाई करना पड़ेगा. Okay, so now we will begin with the session. The PDF has been shared. Now the PDF also has 3 type of questions. Okay, PDF share कर दी गई है. The PDF has been shared by the team on the Telegram channel. The link is there pinned in the chat box. ठीक है, तो you can go to the Telegram channel, download the PDF and come back here. Even if you don't download the PDF, all the questions will be visible right now. वो आप later on अपने reference के लिए रख सकते हो, पढ़ सकते हो. Right now you don't really need this. Okay, fine. What about SEBI? Say institute is not following marks pattern. Yes, I completely agree that the blueprint which is of the institute is not being strictly followed in the online pattern, right? But we expect it to be a little streamlined from this or the next attempt for sure. ठीक है, तो जो भी है हमें अटेम्प्ट करना है, हमें अपियर करना है और हमें फाइट करना है. वी कैन नॉट हम लोग ना इतना ज़्यादा ट्रबल अपने माइंड को नहीं दे सकते हैं फॉर द थिंग्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल. In our control, we have that we can prepare, right? So whatever is in our control, let's do that the best and leave everything else. Okay, fine. So let's start the session now. I hope you all have the PDF. The first part that is of MCQs वो हम सबसे पहले करेंगे. Pre-packaged insolvency resolution process we have to do, ma'am. Ideally it is in your course and you must review it once because it is an important hot topic, I would say, because of the amendment. But if you haven't done it so far, एक छोटा सा मेरा वीडियो है, you can watch that if you want to. Or even if you don't, just make sure कि जो limits होती है ना, that you don't skip. Although अगर हम लॉ की बात करें तो कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. दीज लिमिट्स, दीज पेनाल्टीज, दीज सेक्शन नंबर्स, दीज आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट कंसीडरिंग योर पेपर पैटर्न आई वुड से दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, लिमिट्स, इतने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, इतने दिन में फाइलिंग करनी है, दीज ऑल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव, है ना. तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये करना ही करना पड़ेगा, राइट? चलो. No, I don't think so they consider the ref sheet because it is not required. लॉ में आप रफ क्या करोगे? बट लॉ में प्रॉब्लम है कि याद नहीं रहता. अब देखो, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट लॉ की ये प्रॉब्लम है, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इट इज अप टू यू दैट यू आर नाउ मेकिंग एक्सक्यूजेस और टेकिंग द एफर्ट्स टू ओवरकम योर वीकनेसेस, right? Once again, I'll repeat the same line that I have been repeating it, I think, twice right now. If you fail to prepare now, you're preparing to fail. So it is up to you whether you want to prepare yourself for failure or you want to prepare yourself for success. And if you want to succeed in the examination, if you want to succeed in your life, you must prepare now. You cannot fail to prepare now. Okay, so preparation is one such thing which is very 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 important. अभी भी आपके पास है 3 दिन. You have a lot of time and you can do a lot even if you haven't done it so far. तो भूल जाओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ. Now is the time. and आगे आने वाले जो 2 हमारे 3 दिन हैं, इसमें क्या करना है, एकदम जी जान लगा देनी है. स्टडी एट द मैथ्स, राइट? जो चीज याद नहीं हो रहा उसको पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, याद होगा ही होगा, राइट? चलो. Okay, so with 350 students, we start our session. Is it mandatory to mention section as well as subsection or clause? No, not really. See, अगर आपके objective questions आ जाते हैं where in it is asked कि हाँ ये section number, इसका section number क्या है,
देन ऑफ कोर्स आपको सेक्शन नंबर ही वहाँ पे टिक करना है. बट फॉर दैट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू राइट सेक्शन नंबर्स. वहाँ पे आप स्किप कर दो, एकदम आराम से स्किप करो. इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप प्रोविजन करेक्ट लिखो. ओके, चलो. Do you suggest any material for MCQ? Well, I have incorporated around 80 MCQs. मैंने काट छाट के around 80 MCQs लेके आई हूँ मैं आपके लिए. If you have this PDF, you will be able to see this. Now, these 80 MCQs are, of course, important because I have incorporated it. But they are compiled from different resources of the institute only. ठीक है, ये एमसीक्यूज मैंने नहीं डिजाइन किए हैं. वाई? बिकॉज बिफोर एग्जाम्स इट्स इंपॉर्टेंट नॉट टू चेक योर नॉलेज बट टू गिव यू सर्टन थिंग्स विच कैन बी एक्सपेक्टेड इन एग्जामिनेशन, राइट? तो ये कहीं ना कहीं से आपके इंस्टीट्यूट्स की कंपाइलेशन है, द वंस आई कंसिडर एज इम्पॉर्टेंट. कुछ इसमें आंसर्स आपको एक आध गलत भी दिखेंगे ड्यूरिंग दिस सेशन में, उसको करेक्शन वगैरह भी करा दूंगी. ओके, चलो. Now we will start the session. The very first section A MCQs, we have 80 questions and we will be discussing all these 80 questions through live polls, of course. The live polls takes light of your time, maybe 20-30 seconds more than the usual discussion, but then that is important. Why? One, to boost your confidence. टू एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड बी अटेंटिव, राइट? तो इसलिए हम लोग इसको लाइव पोल्स के थ्रू ही कर रहे हैं. डोंट कंसिडर दिस एज अ टाइम वेस्ट. अगर किसी बच्चे को लगता है नहीं, आई एम नॉट रेडी टू पार्टिसिपेट इन द पोल्स, देन यू आर फ्री टू लीव द सेशन. दैट्स एब्सोल्युटली एट योर डिस्क्रिशन. ओके, बट प्लीज डोंट राइट ऑल दीज थिंग्स इन कॉमेंट्स कि मैम ये अभी पोल नहीं कराई, अभी ये नहीं कराई, अभी वो नहीं कराई. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कमेंट्स, बट आई विल एंश्योर दैट वी डू नॉट वेस्ट टाइम. ठीक है, तो जितनी भी बातें मैंने आपको बोली हैं, दैट वाज नीडेड टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड दैट वाज नीडेड टू गिव यू सम गाइडेंस. नाउ विल स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. सिर्फ और सिर्फ आपको पोल्स पे ध्यान रखना है. इट विल ऑल्सो टेस्ट कि आपने कितना पढ़ा है एंड कितना आपको चीज़ें याद है. एंड आई विल ऑल्सो गेट टू नो हाउ फार माई स्टूडेंट्स हैव डन द प्रिपरेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. 370 स्टूडेंट्स. लेट्स सी कि पहली पोल में कितने लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं. एंड यू हैव टू बी क्विक बिकॉज वी विल बी एंडिंग द पोल राइट अवे. ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा पोल को रखेंगे नहीं, तो आपको जितनी जल्दी आप पोल पे आंसर कर सको उतनी जल्दी करना है. ठीक है, चलो. एंड इवन अगर आपके आंसर करने से पहले ही, साई कुमार, नो राइटिंग ऑफ आंसर्स इन द चैट. ओके, अगर आपके आंसर करने से पहले ही पोल हट जाए, देन जस्ट जज योर सेल्फ कि हाँ मैंने ठीक किया था या नहीं किया था. ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. एक कंपनी है जो विच इज फॉर्म्ड एज वन पर्सन कंपनी. इट मे बी ईदर अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, a company limited by guarantee, an unlimited company, or any of the above or all of the above. So these are the four options given to us. Come on everyone, 93 votes already. और मुझे दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है. So we will end the poll here itself. Question number 1, the correct answer is D. Around 83% स्टूडेंट्स ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है मुझे. Question number 2. Every company shall hold the first board meeting. बहुत ध्यान से and carefully you have to read the question. The first board meeting of board of directors within how many days of incorporation? तो incorporation के अंदर कितने दिन के अंदर अंदर you have to hold the first board meeting? First board meeting. I told you, considering the online pattern, these dates, these limits are very important. तो while revision also, please आप ensure करो कि आपने ये सब highlight किया है या नहीं किया. And if you have highlighted that content, उसको review करते जाना. If you think कि हाँ ये चीज़ मुझे बार बार याद नहीं होती, write it on a piece of paper, write it on copy, और उसको examination के पहले फिर से review करो. Okay? Fine. So I have already received 167 votes. Oh my God, 200 votes. Good, good, good. And the correct answer is A. Question number 3. This is the question that we discussed before also, if you can remember. FIPB का full form क्या है? FIPB stands for, you have 4 options: Foreign Investment Promotion Board, Foreign Institutional Promotion Board,
Foreign Institutional Portfolio Board and Foreign Investment Portfolio Board. If you were there with me for the MTP session, the latest one, उसमें ये question था हमारा and I had discussed with you. चलिए, only 30 votes so far. इसमें confusion हो रहा है क्या बच्चों को? या तो yes, please don't write the answers in the chat. I want every student to participate and assess himself or herself. Okay, चलो. 162 votes. The correct answer for this one stands at Foreign Investment Promotion Board. ठीक आंसर दिया है आप लोगों ने. थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है बट अब नहीं होना चाहिए. ओके, चलिए इस पोल को एंड करते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेबी वाज फर्स्ट established in the year as non-statutory body. Now this is a confusing question. We have four options. The poll 1992, 1988, 1990 and 1985. मैं थोड़ी सी आपको बातें बोल रही हूँ, आप उसको बहुत ध्यान से सुनना. क्वेश्चन में लिखा है एज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी. आफ्टर सेबी एक्ट जब आई उसके बाद सेबी जो हमारी बोर्ड है उसको रिकॉग्निशन मिला था एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. The question is asking us, SEBI was first established in the year as a non-statutory body. SEBI का establishment कब हुआ था as a non-statutory body? We have 2 years. एक है हमारे पास 1992 SEBI एक्ट आने के बाद this became the statutory body. मतलब statute जिस body को recognize करती है और powers देती है. But before that it was a non-statutory body. Come on, quickly now. I have given you a lot of hint. Anyways, I have already received 192 votes और 50% स्टूडेंट्स को लगता है कि ऑप्शन ए है, बट द करेक्ट आंसर इज 1988. अगर यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडी क्वेश्चन में आ जाए देन मार्क माई वर्ड्स, इट विल बी ईयर 1992. ओके, चलो. सो 212 वोट सो फार. लेट्स एंड द पोल एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं. सौरभ, अगर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, नेवर माइंड, यू कैन क्लियरली सी द क्वेश्चन और आप पोल्स में पार्टिसिपेट करो. यू डोंट नीड द पीडीएफ. ठीक है, बाद में हो जाएगा, बाद में आप रिव्यू करने के लिए आपके पास रहेगी पीडीएफ. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 5. कौन से ऑप्शन मीन्स एन ऑप्शन ऑफ अलॉटिंग इक्विटी शेयर्स in excess of the equity shares offered in public issue as a post-listing price stabilizing mechanism? So we have a very unusual term for this. Okay, I think my students know this one. But 24 votes, कहीं ना कहीं थोड़ा deviate हो रहे हो आप. I'm waiting for this one. बच्चों को नहीं आ रहा है या क्या प्रॉब्लम हो रही है? 58 votes only so far and inclination है towards A. बट कुछ बच्चों को B भी लगता है. listed issuer भी कुछ बच्चों को लगता है. Let me tell you, this is green shoe. 107 votes, 59% students, 150 votes, 59% students have said option A. It is option A only. ठीक है, green shoe. अगर बाद में कभी पढ़ना हो या समझना हो, very interesting mechanism. I'll tell you someday, but not right now. Right. Next question, a very easy one. I want at least 200 votes. Let the poll be live for the next question quickly. And नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे एटलीस्ट 200 वोट्स चाहिए विद द करेक्ट आंसर. 90% स्टूडेंट्स मुझे एटलीस्ट करेक्ट आंसर देंगे. अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, फॉरेन कंपनी इज मेंशन्ड इन विच सेक्शन? सेक्शन 2 क्लॉज 40, सेक्शन 2 क्लॉज 42, सेक्शन 2 क्लॉज 44 एंड नन ऑफ द अबव. एक तो नन ऑफ द अबव दे दिया. अच्छा, ये हमको और कंफ्यूज नहीं किया है ना. और बच्चे वोट भी कर रहे हैं क्या? अच्छा, बच्चे किसको वोट कर रहे हैं देखिए जरा. 120 वोट्स मुझे मिले हैं. आई एम वेटिंग फॉर एटलीस्ट 200 वोट्स क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है. और अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, दैट ऑल्सो यू आर अनेबल टू अटेम्प्ट दैट, रिव्यू योर प्रिपरेशन. और जान लगानी पड़ेगी. चलो, ओके, सो आई हैव रिसीव्ड, I have received 209 votes जिसमें 82% स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं. तो this is undoubtedly the correct answer.
फॉरेन कंपनी का एक चैप्टर है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो आपको पढ़ना है। इनफैक्ट उसमें एक सेक्शन, कुछ सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, वो मैंने अलग से लिख भी रखे हैं आपकी उस वाली लिस्ट में। एंड दिस डेफिनेशन इज अनडाउटेडली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो let's end the poll and move to the next question. Again, the next question is from the MTP which we discussed. तो ये क्वेश्चन तो बड़े आराम से बच्चों के साथ हो जाना चाहिए, स्पेशली द स्टूडेंट्स हु वर देयर विद मी फॉर द लाइव सेशन इन द लास्ट MTP. Derivatives. Question number 7. Derivatives are covered under which act? SCRA, Depositories, RBI Act और Competition Act. RBI Act तो वैसे ही हटा दो, इट्स नॉट इन योर सिलेबस, तो थोड़ी नाम से पूछा जाएगा, है ना. डिपॉजिटरीज एक्ट भी उस तरीके से, उस लॉजिक से रूल आउट हो जाता है, तो बचा हमारा कॉम्पिटिशन एक्ट और सिकरा, है ना. तो कॉम्पिटिशन एक्ट में तो हम भाई कॉम्पिटिशन के बारे में पढ़ते हैं, वी डोंट रीड अबाउट द सिक्योरिटीज एंड ऑल दैट. सो इट इज अ वेरी क्लियर कट स्ट्रेट आंसर. अगर थोड़ा सा दिमाग और लॉजिक लगा दे तो वैसे भी हो जाएगा. एंड आई थिंक बच्चे भरपूर लॉजिक लगा रहे हैं. Either they know this one. 173 votes. I'm so happy. 90% students have said it to be option A. Very good. Excellent. चलो. Again, question number 8 जो है question, although it is not in your syllabus, yet I have included it as one of the important questions. And simply the reason being कि ये वाले जो आपके chapter of prospectus and share capital है, from that also some basic questions are being asked in examination as an objective question only. Subjective वाला नहीं आता है, but objective में एक आधी question आ जाता है. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं which you must know, and that's why we have question number 8. कौन सा ऐसा prospectus होता है which prospectus does not include complete particulars of quantum or price? किसमें प्राइस और क्वांटिटी के बारे में नहीं होता है? Come on, 400 students are there, 122 votes only. बाकी क्या कर रहे हैं? जो सोया है वो खोया है. That's what our mentors used to tell us. Come on everyone, 195 votes and the correct answer is C. Question number 9. Question number 9. No insurer carrying on the business of life insurance and general insurance shall be registered unless he has a minimum paid up capital of. Question 9, 50 crore, option A. Option B, 200 crore. Option C, 150 crore. And option D, 100 crores. If anyone has a problem with the speed, they can conveniently leave this session. I don't want to hinder your preparation at all. Okay? मैंने ये चीज़ स्टार्टिंग में इसीलिए कन्वे कर दी थी कि हम लोग कोई भी चीज़ कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट पोल फॉर अ रीज़न. ओके, तो आई कैन नॉट जस्ट स्ट्रेट अवे से कि हाँ ये है एंड एंड इट. We are here for an interactive session. We are here for discussion. We are here for boosting your confidence. We are here for a lot of reasons. Okay. तो मुझे भी यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे करके कुछ वो नहीं मिल रहा है. My speed is absolutely okay and I am saying it with experience. अगर किसी को भी लगता है कि you can do it better तो आप एकदम आराम से करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. But please don't hinder my class by saying मैम फास्ट करो, मैम स्लो करो, इस पे लिखो, वो करो, वो करो. Please don't say all that things. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. आई थिंक द क्वेश्चन हैज बीन डन. प्लीज डोंट प्रॉम्प्ट आंसर्स इन द चैट. और ये सेक्शन 2 क्लॉज 422 कहाँ से आ गया भाई? ये क्या है? चलो, द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9, 100 crores. नेक्स्ट क्वेश्चन, हर प्रोड्यूसर कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होते हैं? आई टोल्ड यू दिस इन द बिगिनिंग इटसेल्फ. यहाँ पे देखो, मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट में ये चीज बताई थी. तो प्रोड्यूसर कंपनी में जो डायरेक्टर है, कितना कोरम होगा, कितने वोटिंग राइट्स होंगे, ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड हियर वी हैव अ क्वेश्चन ऑन द सेम. एवरी प्रोड्यूसर कंपनी शैल हैव एटलीस्ट हाउ मेनी डायरेक्टर्स? वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोड्यूसर कंपनी, नॉट द नॉर्मल कंपनीज, प्लीज. सो वी हैव 4 ऑप्शंस, 10, 5, 3 and 2. 10, 5, 3 and 2. बहुत कंफ्यूजन है अमंग्स द स्टूडेंट्स. आई कैन सी एकदम रैंडम वोट्स आ रही है, किसी में भी डाल रहे हो ऐसा लग रहा है. ओनली 49% स्टूडेंट्स.
140 स्टूडेंट्स हैव वोटेड सो फार, और मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा है ये देख के. दीज आर जनरल क्वेश्चंस भाई, टाइम लिमिट्स ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. यू डोंट हैव टू स्किप दिस एट ऑल. 190 वोट्स, द करेक्ट आंसर इज B5. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन को आप स्ट्राइक ऑफ कर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन को आप स्ट्राइक ऑफ कर दो. वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन. और इसका आंसर ये है, आप ये आराम से कर सकते हो. वी स्विच टू क्वेश्चन नंबर 12. इनफैक्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 12 एक बार कर लेते हैं, बिकॉज नाउ आई वॉन्ट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द ईयर, क्योंकि ये मैंने पहले भी मार्क कराया था दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट. द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर, इन विच ईयर, with its headquarters at New Delhi. Question number 12. I want the poll to be quickly made. Question number 12 था ये. यहाँ पे आपको पोल दिख रही होगी क्वेश्चन नंबर 11 की. डजेंट मैटर. वी आर डूइंग द पोल फॉर क्वेश्चन नंबर 12 ओनली. क्वेश्चन 11 मैंने स्ट्राइक ऑफ किया है, सो डोंट गेट कंफ्यूज. इट इज फॉर क्वेश्चन नंबर 12 ओनली. प्रोड्यूसर कंपनी इज इन योर सिलेबस. हे भगवान रचित, who told you that producer company is not in your syllabus? प्रोड्यूसर कंपनी आपके कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन चैप्टर में एक टॉपिक है. एंड प्रोड्यूसर कंपनी नॉट एज पर द ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956, बट प्रोड्यूसर कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 which has come. ठीक है, पहले हम प्रोड्यूसर कंपनी पुरानी एक्ट के हिसाब से पढ़ते थे. नाउ यू हैव टू रीड इट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, राइट? सो प्लीज फोकस. और कुछ चीजें, इट इज, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमोटिवेट यू एट ऑल. रचित, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना, इट डजेंट मैटर. आई हैव टोल्ड यू कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़नी है. यू इनकॉर्पोरेट दैट. ओके, सो 200 वोट्स एंड द करेक्ट आंसर इज 1956. प्लीज क्वेश्चन नंबर का थोड़ा ध्यान रखना है. द स्टूडेंट्स आई थिंक गॉट कंफ्यूज्ड अ लॉट. नो प्रॉब्लम, नेवर माइंड. क्वेश्चन नंबर 13. इट्स क्वेश्चन नंबर 13. द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कितने दिन के अंदर अंदर होती है? IBC, Insolvency and Bankruptcy Code. The first meeting of the Committee of Creditors shall be held within how many days of constitution of Committee of Creditors? We know that IBC में हमारा एक पूरा flow होता है. IBC में when we make the application, that is known as insolvency commencement date, है ना? IRPC commencement date. और उसके बाद क्या होता है, हम एक प्रोसेस करते हैं. We have the whole chart made, right? And after constitution of Committee of Creditors, कितने दिन के अंदर अंदर हमें क्या करना है? मीटिंग करनी है. अरे रचित मैम, आप पक्का बोल रही है? ऑफकोर्स मैं पक्का बोल रही हूँ. मैं एग्जाम के 2 दिन पहले ना ऐसे बच्चों के साथ मजाक नहीं कर सकती हूँ. अनडाउटेडली इट इज देयर इन योर सिलेबस. द क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड. ऐसा नहीं है कि उसका एकदम भी वेटेज नहीं है. नेवर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड. एकदम आराम से क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं. एंड देयर आर वेरी हाई चांसेस कि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, सी दैट इज द रीजन आई डोंट वॉन्ट टू एडवर्टाइज ओवर हियर. एकदम भी नहीं, कोई प्रमोशनल चीज नहीं है यहाँ पे. बट एक मैं चीज कन्वे करना चाहती हूँ. दैट इज द रीजन. जो स्टूडेंट्स सोचते हैं ना कि हाँ चलो CA फाइनल का कोर्स ले लेते हैं, और CA फाइनल में जो है वही तो CMA फाइनल में. मैं आपको बता दूं, हर जगह डिफरेंसेस है और भर भर के डिफरेंसेस है. So you have to identify those differences. Either your mentor identifies it for you or you yourself identify. Effort ultimately आपका है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा. इस एग्जाम के एक दिन पहले आई ऑल्सो फील सैड फॉर रचित. चलो ठीक है, अब उसको इतना, बेचारे को शौक लगा है यार, उसको इतना मत डांटो. चलो, 242 वोट्स. क्वेश्चन नंबर 3 एंड द करेक्ट आंसर इज 7 days. क्वेश्चन नंबर 14. लिस्टेड कंपनीज के पास ऑडिट कमिटी होनी चाहिए ऑफ द बोर्ड विद मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स, जिसमें से कितने इंडिपेंडेंट होने चाहिए? द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी, यू ऑल नो द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी. दैट composition of audit committee, you know that there should be how many independent directors in the audit committee? Should it be 1/3, half, 2/3 or 2/5? सोचो सोचो सोचो.
1/3 नहीं होते। अगर आपको याद हो, जब हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टॉपिक तो हम स्पेसिफिकली इनकॉर्पोरेट करते हैं ऑडिट कमिटी की। कंपनी के हिसाब से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट 2 है, बट ऑडिट कमिटी के हिसाब से 3 हो जाती है। तो आप याद करो यार, ऑडिट कमिटी के हिसाब से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट हाई रहती है, इट्स 2/3। Which of the following, question number 15, क्वेश्चन प्रिंसी, इफ यू आर फेसिंग सम इशू एक बार आप रिफ्रेश कर लो, पोल्स एकदम चल रही है, बिकॉज अराउंड 200 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ऑलमोस्ट एवरी पोल। आपको दिख भी रहा होगा उसका रिजल्ट। सो इफ देयर इज सम प्रॉब्लम, आप एक बार रिफ्रेश करो, एंड इफ नॉट देन यू जस्ट टिक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट इज नोन एज द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल? मेट्स रिसीट, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ लेडिंग एंड प्रोफॉर्मा इनवॉइस। सो वी हैव 4 ऑप्शंस: बिल ऑफ लीडिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोफॉर्मा इनवॉइस और मेट्स रिसीट। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है ना, सी ट्रांसपोर्ट में हमारा यूज होता है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है। एंड अगर मैं बात करूं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज को रिप्रेजेंट करता है। इट ऑल्सो इज ट्रीटेड एज अ ट्रांसपोर्ट रिसीट। एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल तो होता ही होता है। सो वी हैव 4 ऑप्शंस and I think it's clear cut answer, bill of lading, right? 73% students have voted the same. Question number 16, question number 16 में ना थोड़ा सा confusion है। and एक बात मैं यहाँ पे और क्लियर करना चाहती हूँ। listen to me very carefully, this is an examination tip, because institute, I am, it is just my analysis, I would say। इंस्टीट्यूट जिस भी तरीके से क्वेश्चंस पिक कर रहे हैं, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 17 में दिख रहा होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे दिख रहा है, नन ऑफ दीज। आइडियली क्या होता है, ए बी सी 3 ऑप्शंस दिए और लास्ट में हम देते हैं नन ऑफ दीज, बट समहाउ Institute is repeating the questions in your examination by reshuffling the options. Now that's not a problem, but अगर आपके एग्जामिनेशन में ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहां पे आपको थोड़ा सा लगे अरे यार ये क्या है, बोथ बी एंड सी लिखा है और ए एंड बी ऑप्शन दिए हैं, सो यू हैव टू अप्लाई थोड़ा सा दिमाग कि दिस इज नथिंग बट सम रीशफलिंग ऑफ ऑप्शंस। ओके, तो रीशफलिंग ऑफ ऑप्शंस को आपको ध्यान में रख के थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लेना है, एंड यू हैव टू टेक इट द करेक्ट आंसर, ठीक है। द पोल, वेयर इज द पोल, वेयर इज द पोल गॉन? क्वेश्चन नंबर 16 की पोल, अच्छा इट्स नाउ लाइव, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 16, द पोल वाज नॉट लाइव, तो आप लोग लिखने लगे फटाफट से चैट में। It is not compulsory for private limited companies to conduct statutory meetings, issue prospectus, maintain an index and all of these. For all the students who have voted all of these, मुझे बस एक बात बताओ कि private limited company को क्या statutory meetings conduct करने की जरूरत नहीं होती है? A private company is not required to hold annual general meeting, or a private company is not required to call board meeting. सोचो जरा, do you think it's really correct? ठीक है, प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती, इंडेक्स भी हम बोल सकते हैं कि चलो मेंबर्स कम, ये वो सब चीजें मुझे समझ में आती हैं, बट स्टैट्यूटरी मीटिंग्स रियली, अ प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंडक्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग्स। ये आंसर या ये क्वेश्चन, मैं बोलूंगी ये क्वेश्चन ही गलत है। इसमें या तो ऑप्शंस हमारे चेंज होंगे, और या तो अगर ऐसा आता है तो कन्वीनियंटली आप लिख सकते हो इशू प्रोस्पेक्टस, कि प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस तो किसी हालत में नहीं इशू कर सकती क्योंकि पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती। ओके, सो यू हैव टू डू स्मार्ट अप्रोच। नो यू माइट आस्क मी अगेन मैम कि मैम इंस्टीट्यूट ने तो ये आंसर मार्क करके रखा है, इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे अलग अलग आंसर्स मार्क करके रखती है, बट देन do we need to follow what institute is saying? How can I tell you to follow what is wrong? गलत है तो है, राइट? तो और एक बात एटलीस्ट हमें माननी पड़ेगी, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ बोलती हूँ, एंड यू ऑल्सो हैव टू ट्रस्ट द इंस्टीट्यूट, कि ठीक है हम जब मटेरियल्स बनाते हैं या पब्लिकेशंस निकालते हैं तो वहाँ पे थोड़ा स्कोप ऑफ एरर होता है अनडाउटेडली, बट in examination they are very cautious and no such errors should take place.
and they will take place. Okay, so you have to identify the correct answer only, despite the fact that institute ne kya likha hai doesn't really matter to us. Okay, fine. Question number 17. Question number 17. Public deposits shall not exceed. Public deposits किससे ज़्यादा नहीं होगा? 50% of paid up share capital and free reserves. None of these, देखो पहले आ गया option. 25% of paid up share capital and free reserves and 10% of share capital and free reserves. So these are the four options that we have. We are discussing about question number 17. Let me see if I have this. Okay. This is something which is important for you in the chapter of deposits, right? This tenure of deposits, these limits on deposits. Limits on deposits. So when we are talking about general public from public company, you can see here, right? So you can take a screenshot if you want to, just for your own help. क्योंकि डिपॉजिट्स में अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यही पूछे जाते हैं. दिस इज ओनली समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट, नथिंग एल्स फ्रॉम द चैप्टर ऑफ डिपॉजिट्स. ओके, राइट, कमिंग बैक. क्वेश्चन नंबर 17 की पोल आ चुकी है एंड द करेक्ट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 17 का सी. Next question. Next question. Question number 18. Insolvency and bankruptcy code के हिसाब से which assets will not form part of liquidation assets? Assets of Indian or foreign subsidiary of corporate debtor? Assets subject to determination of ownership by the court? Tangible assets, whether movable or immovable, and all proceeds of liquidation as and when realized. As and when realized. Chalo, I'm waiting. PDF was not clear. Chalo, you give this poll, I'll show you the PDF again. If you want to take screenshot, you can. Chalo. Okay, I hope now it's clear. So I'm giving you 30 seconds, 20 seconds, 10 seconds to take the screenshot. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chalo. Question number 18. I have got 138 votes. काफी सारा confusion हो रहा है बच्चों के मन में. But the correct answer is A. Indian or foreign subsidiary of the corporate debtor. Subsidiary है, that's a different company. Metro. Question number 19. अच्छा, इसका मैंने आंसर नहीं मार्क किया. Question number 19. Metro is a form of enterprise. Metro is a form of which enterprise? Private limited company, government company, public limited company, or triple P. Now here, triple P का मतलब क्या है? If you can comment in the chat box कि what do you mean by triple P? Triple P ka full form. Let me see how many students can tell me this. What is the full form of triple P? What is the full form of triple P? The poll is live for question number 19. That Metro is a form of enterprise. Although it's not a very huge success, I would say, but then it is a form of which type of enterprise? Is it private limited? Is it completely government company? Is it public limited? Or is it triple P? Yes, excellent. Public-private partnership. Very good. Pooja, you don't have to put a question mark over there. Just be confident. That's what is needed before exams. Excellent, excellent. So public-private partnership. Fine. So all the students have correctly answered it, and the students writing in the chat, I think, are the ones who have given the correct answer in the poll as well. Very good, very good. Now, which of the following instrument? Question number 20. Question number 20. Which of the following instrument is also known as hybrid security?
preference share, debenture, public deposit, or equity shares. Hybrid security means a single security, with a combination of, with a um, or you can write it, that combines two financial instruments. बहुत इजी क्वेश्चन है. हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, एक तरीके से आप बोल सकते हो. हाइब्रिड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी विच इज कंबाइनिंग टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. डिबेंचर्स इज ओनली डेट, राइट, बट पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होता है, बस हाँ डिपॉजिट्स हमने एक्सेप्ट किया, विल पे इंटरेस्ट, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डेट ओनली. हाउ एवर इक्विटी शेयर्स तो क्या है, इक्विटी शेयर्स ही है. हाउ प्रेफरेंस शेयर इज Preference share is one such thing which carries the characteristics of both equity and dividend. Oh, sorry, debt, right? It carries the characteristics. So it is a single security, but it combines the benefits or combines the characteristics of two financial instruments, and that's why it is known as hybrid security. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 20 फॉर योर नॉलेज, ये तो आपको जनरली पता होना ही चाहिए. 230 votes. The correct answer is preference shares. The correct answer is preference shares. Okay. Now, Santosh, you can contact the team. Okay, the team will help you in the best possible manner. All my registered students, if you have any issue, you can either contact me or the team. If you need anything or any technical support, it's better to contact the team. They will reply you instantly and at the best possible time, of course. But if you have any subject related query, you contact me. I will ensure that all your queries are answered. If you have already sent me a query and maybe if it is unanswered, you please repeat the query by writing urgent at the top. Okay, urgent CMA final June. And then you send me the query. Undoubtedly, it will be answered as early as possible. Question number 21, the poll is already live. Which of the following FDI in resident entities is not eligible as investee entity? इन्वेस्टी एंटिटी क्या होती है, जिसमें पैसा लगाते हैं. मतलब some foreign company, some foreign source is going to invest over here. They can invest in an Indian company over here. They can invest in some partnership over here. They can invest in some LLP over here. But HF क्या होता है? Hindu undivided family. How can they be a part of HF? में कौन हो सकता है? HF में सिर्फ फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं. How can some foreigner invest in HF? आप ये सोचो, right? So again, if you read the question smartly, then you will be able to get undoubtedly correct answer. Question number 21, हमारा correct answer है A, FDI in HF. Okay. Anidhi company, Anidhi shall not accept deposits exceeding. Question number 22, a very easy question, but again, nidhis में भी ना दो चार चीजें हैं that you have to fulfill the 4 conditions. So those conditions are very important. Don't leave those conditions of nidhi. ठीक है, कि nidhi को ये comply करना होता है with respect to unencumbered deposits, with respect to the ratio of net owned funds, right? So don't forget to read about those conditions. बहुत important है. So we have question number 22. There are 4 options: 15 times, 10 times, 25 times and 20 times. So these are the 4 options which are given to us. फटाफट से करेक्ट आंसर हमें चाहिए. रेशियो हम पढ़ते हैं 1:20, उसी में से हम निकालते हैं. So I have ideally given you the correct answer. Okay. 22, the correct option is D. Right. Chalo. Question number 23, 20 times, very good. Principle of indemnity is not applicable to which type of insurance? Is it life insurance? Is it marine insurance? Is it fire insurance or
None of these. Yes, please don't write answers in the chat. I want everyone to participate in the poll only. If you cannot participate in the poll for any reason, then stick the answer to your own self and then you can cross verify whether it was correct or not. चलो 95 वोट्स आए हैं भाई अभी तक सिर्फ. Principle of indemnity. Indemnity means making good the loss. And you cannot make good the loss of what? मरीन इंश्योरेंस है, शिप डूब गई, हम उसकी भरपाई कर देंगे. माल कितना का डूबा? अगर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, right? We can make good the loss. Fire insurance, there is a godown which caught fire, right? The godown consisted of maybe some goods of 15 lakhs. So the insurance company can pay 15 lakhs and you can refill the goods, refill the stock. But if someone died, you can never refill or replace that person despite the fact, no matter how much amount or how much money you give, right? So we can never make good the loss in case of life insurance, and that is why it is not considered as a contract of indemnity, है ना? चलो, so 250 votes आए. खुशी हो रही है मुझे देख के that you all are actively participating, but I can see still there are around 100 150 students who are sitting ideally. Participate, my dear, participate. It is for your own benefit. ठीक, चलो. मैम इंस्टीट्यूट ने 25 दिया था सजेस्टेड आंसर में. I don't know which question you're talking about, but anyways, we're discussing, right? So we don't care what is given. As I told you, we have to ensure कि हाँ, अच्छा इसमें ना हाँ 25 times I agree. तो वो गलत है बेटा. Question number 22 में इंस्टीट्यूट ने शायद 25 times लिखा है, but that is wrong. It is 20. You all know that, right? बहुत easy question, बहुत simple question है. Okay, now. Question number 24, the poll is already live and around 115 students have already voted. I haven't even read the question. The process of money laundering generally involves 3 stages. कौन सी 3 stages होती हैं ये हमें नहीं बताना है. We just have to tell the second stage. 3 stages होती हैं. The first stage is placement. Then comes... And then what is the last stage? That also we don't have to tell. Telegram link is working. कुछ थोड़ा सा refresh करो. Because other students have downloaded. एक बार मैं फिर भी बोलती हूँ कि टीम को चेक कर लेंगे कि लिंक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. चलो 215 votes. The correct answer is C. तो placement, layering, integration है ना. These are the 3 stages. पहले हम उसको Please answer in poll. Next question, question number 25. Question number 25 is a very general question. हर एक student answer कर सकता है. Even if you have, please don't write answers in chat. I'm glad to know that it is increasing your confidence level. Question number 25. The poll is live. Which of the following is not a motive for setting up a joint venture? So whenever you go out to set up a joint venture, what is your motive? It is to diversify risk. Is it to get that tax benefits or tax shelter? Is it to for economies of scale? That is means we will work on a large scale, so we'll end up incurring lesser costs. So how it is? What is the motive? What is not a motive? So we also have an option of none of these. So you read the question carefully and answer accordingly. Okay. Ma'am, small companies amendment is applicable for this attempt. Is there any major amendments? Not very major amendments, but I don't know how far amendments you have covered, because recently there were a lot of amendments. Yes, the definition of small company has been amended in a sense that a rule has been incorporated, है ना. तो अब हमारे लिए relevant limits जो होंगी वो 2 crore and 20 crore होंगी respectively for paid up capital and turnover. Okay. I think they can also type CA Shivangi Agrawal on Telegram. So you go to Telegram, you type it, you will find, you can join and you can download it from there. Okay, even if the link is not working, doesn't really matter. Okay, so the question number, question 25, the correct answer is none of these.
Next question. The holders of GDR do not carry which of the following right? Question number 26. We have a concept called as depository receipts. Depository receipts, we have Indian depository receipts, we have global depository receipts. Although you don't have to learn and read everything in the detail कि हाँ उसके क्या क्या सारी चीजें होती है, but still you have to have that idea of depository receipts undoubtedly. So the poll is live, right? Okay. So when I'm talking about GDR, or even if I'm talking about IDR, I'm talking about any depository receipts, they do not get shares directly. They are getting the rights of dividend, they are getting some other rights also, but there is one right which they do not get, and that is what is asked in the question here. A, voting right, B, dividend, C, all of these, and D, capital appreciation. GDR में डिविडेंड मिलता है, कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है, बट वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं. वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं. Again, an MCQ tip over here. In 90% of the questions, if the last option is written all of the above, 90% of the question, the answer will be that only. So if you absolutely have no idea about that MCQ, you can easily mark all of the above. But only in 90% of the question, 10% questions are exemption. So first thing, you have to apply your brain. Second thing, if you don't know at all what is the answer and you have to guess, make a plain guess, then choose this one. Okay. Yes, 2 crores and 20 crores. Correct. Fine. Next question. Now, I'm not going to entertain these type of queries in between the chats, please. If you have any such doubt which you think you want me to answer, then drop in the comment. I will reply it later. Okay? Let's not disturb the whole class. Chalo. Question number 27. In the case of a meeting of board of directors or of a committee, the minutes shall also contain. पोल करेंगे आप और आंसर मुझे करेक्ट बताएंगे. एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर डन विद द पोल, यू विल टेल मी द सेक्शन नंबर ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग, बिकॉज दैट इज वन सच सेक्शन which is very important from your examination perspective, the section number, okay, for minutes of meeting. So you'll not prompt the answer in the chat, you have to tell me the section number. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उसके जो मिनट्स बनते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए? द नेम्स ऑफ द डायरेक्टर्स हु आर प्रेजेंट, द नेम्स ऑफ द डायरेक्टर्स हु हैव डिसेंटेड, बोथ और नन ऑफ दीज. Okay, so I can see some students writing the section numbers, and I can see around 170 votes also. Good. Wow, I'm impressed. सेक्शन नंबर तो सबके सब एकदम सही बोल रहे हैं. Section number 118 talks about the maintenance of minutes of meetings, and section number 119 talks about inspection. Chalo. 216 votes. The correct answer is C. Question 28. सी फर्स्ट चैप्टर में हमारी जो बेसिक डेफिनेशंस होती है ना, प्राइवेट कंपनी, नॉट पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन इतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, बट प्राइवेट कंपनी, देन वन पर्सन कंपनी, देन ऑब्वियसली स्मॉल कंपनी एंड सब्सिडियरी. ठीक है, कभी कभी एसोसिएट भी पूछ सकते हैं, बट ये जो डेफिनेशंस है ना, सम बेसिक डेफिनेशंस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. द पोल फॉर क्वेश्चन नंबर 28 इज लाइव. Private company means a company having minimum paid up share capital as may be prescribed, and which by its articles, except in case of OPC, a private company limits the number of members to 200. Fine. Which excludes. तो प्राइवेट कंपनी में 200 मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, बट इस 200 की लिमिट में वी डोंट इंक्लूड सर्टेन थिंग्स. व्हाट वी डोंट इंक्लूड ये हमें जानना है. The persons who are in the employment of the company, the persons who having been formerly in the employment of the company were members while that in that employment and have continued to be the members after employment ceased,
Both A and B are correct and none of the above is correct. So you have 4 options, a very basic question. देखो, इवन वाइल डूइंग सिंपल एमसीक्यूज बहुत सारी चीजें होंगी जो आप ग्रास्प कर रहे हो, आप रिकॉल कर रहे हो, एंड विद वन कंसेप्ट यू आर एबल टू रिकॉल द रिलेटेड अदर कंसेप्ट्स एज वेल. और बीच बीच में मैं आपको टिप्स देती जा रही हूँ, बीच बीच में आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल्सो लॉट ऑफ पॉइंट्स. ओके, सो बस अपने दिमाग को, नाक कान सब खुले रखने हैं, एंड यू हैव टू फोकस एंड मेंटेन दैट फोकस. Right? So 218 votes were there around. Both A and B are correct. Chalo. The following cannot become a member of Nidhi company. Nidhi is also an important part of your syllabus. ये मत सोचना कि निधि कंपनी आपके सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल है निधि कंपनी आपके सिलेबस में, एंड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. छोटे छोटे जो इसमें भी लिमिट्स वगैरह चीज़ें दी हुई हैं, उनसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं. हु कैन नॉट बिकम द मेंबर? अ बॉडी, कॉर्पोरेट, ट्रस्ट, अ माइनर, और ऑल ऑफ द अबव. नाउ हियर दैट एमसीक्यू टिप माइट वर्क which I had given a few time ago. Body, corporate, trust, minor, all of the above. कितने वोट्स आए? 174 votes. 64% students have given me the correct answer. It's all of the above. Next question. Question number 30. According to section 2, clause 6, associate company in relation to another company means, see, associate company as such I wouldn't consider it very important, but फिर भी कभी एक आधी क्वेश्चन आ भी जाता है, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ही है और आपको पता भी होगी. तो दो आई हैव नॉट इंक्लूडेड इट इन माई लिस्ट, बट फिर भी आप एसोसिएट कंपनी अच्छे से देख के ही जाना. एसोसिएट कंपनी कई बार ना, अब आपके जो नया सेक्शन इनकॉर्पोरेट हुआ है जिसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं कि हाँ इसको डिफाइन कर दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएट कंपनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्शन. तो यहाँ पे इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको हर एक टर्म का मीनिंग अच्छे से पता हो. Okay, it's not important to learn the definition word by word as it is, but if at all it is asked, you should be able to write it. ठीक है? नहीं, निधिज में रूल नंबर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मत याद करना, और अब तो बिल्कुल भी नहीं स्मृति. आप एग्जाम को भी हमारे साथ चलिए बीच बीच में टिप देने के लिए. आई विश इफ दैट कुड हैपन, आई वुड हैप्पीली कम विद ऑल ऑफ यू. मैं तो बहुत खुश होती. और हो सकता है आप लोग को थोड़ा डांट वाट भी लगाती रहती है, अरे ये क्या लिख रहे हो ऐसे करके. खैर, दैट इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल. तो हम अपने क्वेश्चंस को रिव्यू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 30, all of the above. So correct option is D, all of the above. Chalo. Next question, question number 31. Government company. Okay, तो चलो, एक टीम ने भी आपको टिप दे दी है कि कीप मोबाइल इन पोर्ट्रेट मोड इफ यू आर नॉट एबल टू सी द पोल, राइट? चलो, everyone is giving you the tips right now. क्वेश्चन नंबर 31 पोल लाइव है. गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है जिसमें इन विच नॉट लेस देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, और पार्टली बाय सेंट्रल एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी. हाँ बाबा, राइटिंग मतलब कीबोर्ड पे राइटिंग. ठीक, चलो. क्वेश्चन नंबर 31. देखो, कई बार बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन होता है. एक होता है मोर देन 50%, है ना, और एक होता है 51% और मोर. आई होप इंद्रा यू कैन सी द आंसर फॉर द 30th क्वेश्चन.
50%, 51% और मोर एंड मोर देन 50%, ये दो अलग अलग phrases है which are used in अलग अलग two very important definitions in this chapter. One is government company and one is subsidiary. तो जब हम subsidiary identify करते हैं तो we see what more than 50%, but when we identify the government company then we see at least 51% should be there. So 51% or more is identified. तो काफी सारे polls आ गए हैं मेरे पास, around 260 students have voted और correct answer आपने बता दिया है मुझे that it is 51%. 85% students have given me the correct answer. चलो अच्छी बात है. Okay, question number 32. Question number 32. Dormant company. What is a dormant company? It is formed and registered under this act. See, a dormant company may obtain the status of being a dormant company a little later also, and a dormant company may obtain the status of a dormant company as and when it is formed also. When it is formed for not doing the business instantly, मतलब कंपनी तो मैंने बना ली है but I am not going to do the business instantly in that company, right? I have incorporated the company maybe for a future project, maybe to hold an asset, just to hold an asset, क्योंकि asset अच्छा मिल रहा था तो कंपनी बना ली, कंपनी के नेम पे asset होल्ड कर लिया, अभी कुछ काम वाम करना नहीं है तो क्या करें, तो हमने क्या कर लिया, डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन कर लिया. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन. सो देयर आर 3 ऑप्शंस व्हिच आर गिवन टू अस एंड वेरी क्लियरली द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन 32. तो कितने वोट्स आए भाई देखें जरा, 180 वोट्स. पोल एंड कर सकते हैं आप. 180, 200 वोट्स आ गए. चलो नॉट बैड. 83% स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है. इंटरिम डिविडेंड. You don't need the annotated PDF at all because PDF में answers आपको दिए हुए हैं, so don't worry about that. ठीक है, चलो. Interim dividend. Interim dividend is decided and declared by whom? By the shareholders in AGM, by the board of directors, by audit committee, or by the shareholders in EGM. वेरी इजी क्वेश्चन, बट अगेन इंस्टीट्यूट के मटेरियल में शायद कहीं किसी क्वेश्चन में इस टाइप के कोई एरर है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको. इंटरिम डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय द मेंबर्स. इंटरिम डिविडेंड होता ही वही है जो एजीएम के पहले डिक्लेयर कर देती है. तो कौन डिक्लेयर करता है? इसकी पावर बोर्ड को दी गई है डिक्लेयर करने की. आंसर तो मैंने करेक्ट बता ही दिया, उसके बाद जो वोट करेंगे, बट आप लोग वोट इतने टाइम तक कर लेते हो, है ना? Anyone who has to vote, please don't prompt the answers in the chat. The correct answer is A, undoubtedly. 222 students. Please provide the questionnaire. The questionnaire is right here. It can be obtained through my Telegram channel. It has been posted over there, Pawan Khandelwal. आप उसको जाके Telegram channel पे download कर सकते हैं. Okay. Unpaid dividend after 7 years. डिविडेंड का जो चैप्टर है ना आपका, उसमें जो हमारा लास्ट सेक्शन होता है, सेक्शन 127, विच एक्चुअली टॉक्स अबाउट द कॉन्ट्रवेंशन, कि हाँ अगर डिविडेंड 30 डेज में पे नहीं किया तो क्या होगा इन द एक्सेप्शनल केसेस व्हेन द कंपनी नहीं भी पे करेगी तो भी चलेगा. दैट सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन द टाइम लिमिट्स अंडर डिविडेंड चैप्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल दोज. ठीक है, कि कितने टाइम के अंदर डिविडेंड पे करना होता है, कितने टाइम के अंदर ट्रांसफर करना होता है आईईपीएफ में, अनपेड डिविडेंड में. ऑल दीज टाइम लिमिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 34. 201 votes received so far. I'm glad you're not looking at the institute's answer. अच्छा, इंस्टीट्यूट का तो है ही नहीं ना फाइल, इधर उधर से कंपाइल किया हुआ है तो मिल नहीं रहा है. तो आंसर सबके सही आ रहे हैं. अगर इंस्टीट्यूट की फाइल देके मैं बैठाती ना तो आधे बच्चे लिखते ए, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने लिख रखा है ए. तो कुछ कुछ आंसर्स ना गलत भी हैं, मैं लास्ट में आपको टिक करा दूंगी जो आपका आंसर वाला वो है ना, when the answers are incorrect, for all the students who have not actively participated in the polls. Okay, chalo. Question number 35. Now you all know that एक कंपनी में maximum number of directors कितने होते हैं? The maximum number of directors in a company are 50. सबको पता है ना?
पर यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक कंपनी में 15 डायरेक्टर्स तो है, मतलब मैक्सिमम उन्होंने ऑलरेडी ऑब्टेन कर रखा है, बट दे इंटेंड टू अपॉइंट मोर. So they have already 15 directors, but they want to appoint more. So for that, it has to take approval of. मतलब ये तो हमें बता दिया, they have already told us that they can appoint even more than 15 directors, but for that they have to take approval. किसका approval लेना है भाई? Do they need to take the approval of the board of directors, central government, shareholders through SR? मेरा बस चलता ना, मैं एक और ऑप्शन डालती, shareholders through OR, but then the option is given none of the above. तो 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं. 215 वोट्स मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं. वाओ, यू गाइज आर क्विक यार. And the correct answer undoubtedly is B. So by passing SR, we can increase this number of directors even beyond 15. Possible है. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी कि 1-person कंपनी में व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन 1-person कंपनी? इन 1-person कंपनी व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स? फटाफट से देखते हैं मैं कौन बता पाता है मुझे ये. One-person company maximum number of directors. तब तक हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. एंड यू इन द मीन वाइल राइट एंड लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट. Which of the following, question number 36, which of the following is a principle of corporate governance? कौन सी principle है? Transparency, accountability, independence and all of the above. तो that is the question जिसकी poll live है. And let me see now. अरे बाबा रे, कोई लिख रहा है 15, तो कोई लिख रहा है 1, तो कोई लिख रहा है 2, कोई लिख रहा है 200 ना बाबा. Minimum 1, maximum 15. Minimum 1, maximum 15. I got this answer, but इतनी तेजी से वो चैट स्क्रॉल हो रही है ना, I'm unable to even read the names. But जिसने भी लिखा है commendable. See, even if it is a small company में member एक ही होता है, directors can be till 15. एंड उसके बियॉन्ड भी हो सकते हैं. सो इवन अगर लगता है 1% कंपनी में हमें और डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, यू कैन अपॉइंट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सो कीप इन माइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर in a OPC is 1 and the maximum is still 15 for all types of companies. Okay, पर member एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है. Fine, चलो. Question 36 में we have got around 220 votes and the correct answer straight away, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी इसमें तो, है ना. करेक्ट आंसर हमारा क्या था? ऑल ऑफ दी अबव. चलो, एज पर सेक्शन 203, as per section 203, every company belonging to the prescribed classes shall have whole time KMP. तो कुछ प्रिस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनीज को होल टाइम केएमपी अपॉइंट करना पड़ता है. अब हमसे ये नहीं पूछा है कि विच टाइप ऑफ कंपनीज नीड टू अपॉइंट होल टाइम केएमपी, बट हमसे ये पूछा गया है, वी हैव बीन आस्क्ड दैट व्हाट इज होल टाइम केएमपी. मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, manager, and in their absence. Now if I look at the question straight away, मुझे लगेगा अच्छा whole time director, but then you have to carefully read all the options. ये हमारा instant reaction होता है, but if you read all the options, company secretary, CFO and all of the above, my dear, अगर मैं आपसे KMP की definition बोलूं define करने के लिए, so what will you write? CEO, CFO, managing director, CS, manager and whole time director, ये सब आते हैं कि नहीं आते हैं? So यहाँ पे होल्ड करके डैश कर दिया है, आई एग्री, बट देन शैल हैव द फॉलोइंग KMP. तो अगर हम KMP की बात कर रहे हैं, सो वी विल राइट everyone in this KMP, right? So we cannot restrict our answer to just whole time director. मेरा भी instant reaction when I was looking at the questions, I was like, whole time director, such an easy question. But then I said, और ये company secretary भी दिया हुआ है, तो I had to rethink यहाँ आंसर क्या होगा. Okay, so my dear students, करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसका? ऑल ऑफ दी अबव.
Chalo, 222 votes, good. Thank you very much, ma'am, for conducting traffic lecture, and it's heartfelt gratitude, you and team as well. Thank you so much. This is actually all we need. सच बताओ, at the end of the day, who doesn't like this? And अच्छा लगता है अगर students के लिए आप कुछ करो और students उस बात को acknowledge करते हैं, तो that's the best feeling in the world. चलो खैर, fine. I am speaking in English as well as Hindi with more of English, okay, Vijaya Lakshmi? So if you listen to it concentratedly without concentrating on the Hindi words, you will see that everything I'm repeating in English as well. Chalo. At least one woman director is required. Woman director की requirement कहाँ होती है? Every listed company, every other public company having paid up share capital of 100 crore rupees more, every other public company having turnover of 300 crore rupees and more, and all of the above. थोड़ी बहुत ना इंस्टीट्यूट के चीज़ों में ऐसी गलतियां हो सकती हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा है, बट थोड़ी चीज़ों को आपको इग्नोर करना है, इग्नोर कर करके हमें आंसर्स निकालने हैं, ठीक है? सो बी प्रिपेयर्ड इवन फॉर योर एग्जामिनेशन कि अगर कुछ लगता है अरे दिस इज नॉट इन द कोर्स, अरे दिस इज ये कैसा क्वेश्चन है, जस्ट काम योर सेल्फ डाउन, थोड़ा सा लंबी लंबी ब्रीथ करना, ब्रीद इन ब्रीद आउट फॉर सम 30 seconds 1 minute. इट्स नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम. एंड देन अच्छा, पोल इज लाइव, डोंट प्रॉम्प्ट द आंसर्स इन द चैट. थोड़ी सी गलती माफ करो यार. So take some deep breath and then try to write whatever you can. See, जब problem आ जाती है ना, तो the only option that you have is to solve the problem. You cannot just complain about the problem. तो जब question paper आ जाएगा, even if you don't find anything इन ऑर्डर, या लगे कि यार ये क्या हो गया है मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों है, ये क्या पूछ लिया, ये तो मैंने नहीं पढ़ा था, डोंट पैनिक एट ऑल. Just take a deep breath. Whatever problem you are facing, I think almost every student will be facing the same problem. So we can certainly expect कि थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, but we should not complain all the time, है ना? तो जो problem है, just focus on that solution. Question number 38, all of the above. चलो. Question number 39. SSD. Thank you, Lalit. SSD. Question number 39, SSD. A person appointed as small shareholders director shall vacate the office if. चलो फटाफट से. The director incurs any of the disqualification. See, if he incurs any of the disqualifications in section 164, he shall not be eligible to be the director. Right? If he incurs any of the grounds of vacation under section 167, again he has to vacate the office. He cannot continue as the office of director. If he fails to meet the criteria of independence, every SSD is considered also as an independent director. So if he fails to meet the criteria of independence, so he shall vacate the office of SSD as well. Right? And all of the above. तो ये भी है, ये भी है, ये भी है. तो ultimately what a correct answer comes, all of the above. And 94% students have answered the same. Very good. Question number 40. Quickly, now we are not going to waste a lot of time. जल्दी जल्दी फटाफट करना है. Section 173 के हिसाब से, according to section 173, the board meeting can be called by giving at least 7 days notice in writing to all the directors at the registered address. In India, outside India, whether in India or outside India, and none of the above. Now this is the difference कि आप कितना analyze करते हो sections को while you are reading, because if you read at section number 173, it's not written whether in India or outside India, rather it is written just at their registered addresses, and at some place it is written in India. ठीक है? तो ये मैंने क्लास में आपको एक्चुअली आइडेंटिफाई कराया भी है, बट हाँ इतनी बातें कहाँ याद रहती हैं. तो you have to understand, if it is written at one place at registered address, and in some other section it is written registered address in India, that implies that this means registered address whether in India or outside India. Yes or no? Mostly helpful and confidence building session, ma'am. Thank you so much. Chalo.
So I think now you have got the answer, and you will keep this answer in your mind whether in India or outside India is the correct answer. चलो, क्वेश्चन नंबर 41. 41 में भी आपको थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान देना होगा. इन अ पब्लिक कंपनी डैश ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर्स इज द पोल लाइफ फॉर क्वेश्चन नंबर 41. Retiring directors shall retire in every AGM. 1/3, 2/3, all, or none of the above. All or none of the above. See, in public company, we have the concept of, not in all companies, we have the concept of rotational directors. Rotation of directors. So, how many directors shall be rotational? That is the first question. And then out of these rotational directors, how many shall retire? वो दूसरी बात आती है. हमसे यहाँ पे दूसरी बात पूछी गई है. You have to keep that in mind. Right? We have been asked the second thing. In a public company, how many of the retiring directors shall retire in every AGM? एक्चुअली यहाँ पे रोटेशनल होना चाहिए, बट दैट इज ओके. मैंने आपको कहा ना, थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, बट अपना दिमाग लगा के आंसर कर देना है. तो आपने जैसे दिमाग लगा के आंसर किया है ना, बस यही दिमाग एकदम ओपन रखना. एग्जाम में बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज 1/3. क्वेश्चन नंबर 42. वेरी गुड. अब भी थोड़ी देर पहले इसको मैं स्ट्राइक ऑफ कर रही हूँ. डोंट क्रिएट अ पोल फॉर क्वेश्चन नंबर 42. यू कैन स्ट्रेट अवे क्रिएट द पोल फॉर क्वेश्चन नंबर 43, क्योंकि 42 इज द क्वेश्चन विच वी डिस्कस जस्ट अ लिटिल अगो कि हमारे सेक्शन कौन सा होता है मिनट्स ऑफ मीटिंग का. सो वी नो दैट सेक्शन 118 imposes a statutory obligation. So I am striking it off. We are not discussing this, although correct answer is this one only. Question 43. Question 43. हमारे पास एक चैप्टर है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन. इंस्पेक्शन के चैप्टर में in the chapter of inspection, we have discussed 3 terms undoubtedly: inspection, inquiry and investigation. यहाँ पे हमसे पूछा गया है that the report on inspection has to be submitted to whom? Central government, RBI, NCLT, or none of the above. The poll is live. See, the authorities who inspect, actually registrar या inspector appoint होता है, ये inspection करते हैं. inspection के बाद report देते हैं along with the recommendation कि further investigation की जरूरत है या नहीं है. and according to that recommendation further investigation order किया जाता है या नहीं किया जाता है. they submit the report to whom? They submit the report to whom? छोटी छोटी बातें हैं. If you remember the provision of inspection, then you will be able to see here as well. The correct answer is central government. Jyoti Krishna, I'm your registered student of December 22. Then why are you here? Came here to say thank you. Classes are just awesome, especially the chats. Okay, thank you so much. I'm glad to know you're enjoying the classes. Yes, same here. Okay, I think Rajyam is also a student of December 22. चलो खैर, आई एम गुड टू नो, आई एम हैप्पी टू नो कि भाई December 22 के स्टूडेंट्स में भी ये जोश है अभी, and I hope this stays with them till their exams. Question 44, the poll is already live. What are the modes of corporate restructuring? Corporate restructuring के कौन से modes होते हैं? Amalgamation, compromise, arrangement. I don't think I need to waste any time in this particular question. All of the above is the correct answer, and we can straight away move to question number 45. Even if you haven't answered the poll for this one, doesn't really matter. Question 45. Question 45. Section 233 prescribes the simplified procedure for merger or amalgamation of. मैं आपको याद दिला दूं कि सेक्शन 233 में जो कॉमनली हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं फास्ट ट्रैक मर्जर. सो अपार्ट फ्रॉम द लॉन्ग प्रोसीजर कि कैसे मर्जर होता है, वी ऑल्सो हैव अ क्रिस्प शॉर्ट वर्जन, फास्ट ट्रैक मर्जर, which is not available for all types of companies. हर एक कंपनी कैन नॉट यूज दिस सेक्शन एंड गो फॉर अ फास्ट ट्रैक मर्जर. कुछ कंपनीज के लिए ही ये अवेलेबल होता है. सो व्हाट टाइप ऑफ कंपनीज, किन के लिए अवेलेबल होता है?
That is the question. Two or more small companies or holding a subsidiary or some prescribed class of companies or all of the above. So again, all of the above wala logic lagao and it's D, all of the above. Right? Chalo. Question number 46. जब एक कंपनी अमलगमेट हो जाती है, so the old books are not required. So can it dispose of the old books? And the books and the papers of amalgamated companies shall not be disposed of before 8 years, before 15 years, without permission of CG and none of the above. So these are the 4 options that are available to us. Usually ऐसी जगह हम preservation जब भी पढ़ते हैं of papers या documents, तो हम 8 साल पढ़ते हैं कि for 8 years the preservation has to be done for the papers. But if we talk about here, तो यहाँ पे हमारे पास provision अलग है. What is the provision? We need to apply for permission from CG. In fact, CG assign करते हैं एक person को who ensures कि हाँ कोई fraud का evidence वगैरह तो इन लोग नहीं जलाने वाले हैं. So अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, so CG permits you the same. So we have received 180 votes. I told you, mostly because it is 8 years throughout Companies Act, so students have this conception only, but here it is different, my dear. Here the correct answer is without permission of CG. Okay, so mark this one if you have got this incorrect. Mark this, put a star. A question to be reviewed before exams, on the day of exam or just before exams, right? Okay. Winding up का main purpose क्या है? Question number 47. The main purpose of winding up of a company is to realize the assets, pay the debts, both A and B, and none of the above. Winding up is different from dissolution. Winding up is different from dissolution. Dissolution, company loses the existence and legal status. In fact, आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे company actually dies because it is a legal person, it has to witness a legal death. तो company जब dissolve होती है, when its name is removed at that particular point of time, company dies. Here it only means the sale of assets to pay liability. ये जो प्रोसेस होता है ना, सेल करो एंड पे ऑफ द लायबिलिटी, ओनली दैट इज नोन एज वाइंडिंग अप. यूजुअली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द टू, राइट? सो बोथ ए एंड बी, both A and B. Okay, fine. The next question, question number 48. Question number 48. We discussed about the definition of foreign company कि section 2 clause 42 में foreign company defined है, and foreign company means a company which is having a place of business in India. It's incorporated outside India but having a place of business in India, whether physical or through electronic mode. So if the company is having a place of business in India through electronic mode, the electronic mode has also been defined. जैसे होता है ना कि हम टेलीफोन पे सर्विसेज ले रहे हैं, हमें कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज लेनी है, डिस्कस्ड इट ऑन टेलीफोन. सो आई हैव टेकन सम सर्विसेज फ्रॉम अ फॉरेन सोर्स थ्रू टेलीफोन. That means that foreign company is having a place of business in India through this electronic mode, right? So what is electronic mode? That has been defined and we have been given some options, that B2B and B2C transactions or other data interchange or accepting deposits, that is also electronic mode. तो ये दोनों चीजें हमारी कवर होती हैं. सो आइडियली आवर करेक्ट आंसर विल बी 48 का सी. 48 का सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट even from subjective type of question. Subjective question के perspective से भी ये बहुत important है. You are often asked the different types of penalties under Companies Act. The different types of penalties under Companies Act. यार ये तो देखो बच्चे पूछते भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन है ना. जस्ट लुक एट व्हाट यश इज आस्किंग.
मैम अगर ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव बोथ ऑप्शन है सेम क्वेश्चन में, देन इज ऑल ऑफ द अबव करेक्ट? रियली यू थिंक आई कैन टेल यू दिस? नो 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 माय डियर, ये मैंने सिर्फ एक आपको सजेशन दिया था कि इन केस आपको कोई आइडिया नहीं है देन यू कैन मार्क इट एज ऑल ऑफ द अबव, राइट? तो ऐसा नहीं होता है कि हर क्वेश्चन में ऐसा होता है, ये सिर्फ ऐसे हिट एंड ट्रायल चीज़ें हैं, इट कैन बी एनीथिंग। ऐसे जाके नहीं बोल देना कि हाँ मैम ने, हाँ हाँ। ओके, so question number 49. We have the penalty fine also, we have imprisonment or fine also, we have imprisonment and fine also, we have imprisonment or fine or with both also. तो हमारे पास सिर्फ imprisonment भी होता है. So we have ideally 5 types of penalties, जिसमें से यहाँ पे 3 types of penalties are given to us. So the answer is all of the above. NCLT question number 50. Quickly. Question number 50. The order of NCLT can be appealed at. हम NCLT के अगेंस्ट कहाँ अपील कर सकते हैं? Is it NCLAT? Is it Supreme Court? See, they don't give you much options. Is it none of the above or is it any one of A or B? मतलब we can appeal to NCLAT also and we can appeal to Supreme Court also. So what is going to be the correct answer? Question number 50. I don't think we need a lot of discussion over here. The correct answer is NCLAT. है ना, हमारे पास एक jurisdiction है, हमारे पास एक hierarchy है and we must follow that hierarchy, right? In fact, NCLT and NCLAT जो हमारी authorities हैं, they have the powers as good as of a high court. मतलब we are considering them equivalent to a high court. इनके against हमको अगर appeal करना होता है, what is the process? We have NCLT, we go to NCLT, इनसे पसंद नहीं आया तो NCLAT के पास, इनसे पसंद नहीं आया तो Supreme Court. That is the highest appellate authority that we have in India, right? But if we talk about special court, जो हम एक स्पेशल कोर्ट का भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो स्पेशल कोर्ट इज कंसिडर्ड एज अ सेशंस कोर्ट. तो स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट यू अपील टू हाई कोर्ट, राइट? एंड आफ्टर हाई कोर्ट ऑफ कोर्स देयर इज सुप्रीम कोर्ट, यू नो दैट, राइट? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है. एंड जब भी हम एपलेट अथॉरिटीज में अपील करते हैं, द टाइम लिमिट इज यूजुअली 45 days एंड वेन एवर वी अपील टू सुप्रीम कोर्ट द टाइम लिमिट इज 60 days. सो इन जनरल होता ही है, ठीक है? हाँ, एनसीएलटी, वेरी गुड साथिया, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, है ना? क्वेश्चन नंबर 51. चलो अगला क्वेश्चन हमारा आ ही गया. क्वेश्चन नंबर 51. You are making an appeal to Supreme Court. Although the poll is live, I really don't think the poll is required. But चलो कर लो. सुप्रीम कोर्ट में वैसे भी आपके सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही जाते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे नहीं जाते हैं, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट इज नॉट देयर टू जज कि इसने ओवर स्पीडिंग की है या नहीं की है. नो, उसके लिए ठीक है, हाई कोर्ट तक सब चीज़ें हो सकती हैं. सो सुप्रीम कोर्ट में आप जब भी चाहते हो, यू गो ऑन मैटर्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ बेसिकली, इनफैक्ट अंडर दीज लॉज दैट वी हैव स्टडीड. चलो, क्वेश्चन नंबर 51, द करेक्ट आंसर अनडाउटेडली इज 60 days, जो मैंने अभी अभी आपको बताया. एंड नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 52. मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट. Question number 52. Let the poll be live and mark this question number 52 as important. मैम important में भी important, हाँ, वो चीज़ें जो आपको शायद बहुत ज़्यादा पता नहीं होती हैं and they are needed. एक independent director cannot serve in more than how many listed entities? We know that under Companies Act, we have read about the maximum number of directorships. We have read about the maximum number of directorships. श्रीकांत, आई विल एक्सप्लेन यू दिस लॉ सब्जेक्ट में फैक्ट कैसे बहुत आराम से. इनफैक्ट आई पुश अ वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ, वेरी इंटरेस्टिंग वन, बट अभी बिल्कुल भी नहीं. हाँ, सेक्शन 165 में वी रीड अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स, कि एक पर्सन कितनी कंपनीज में मैक्सिमम डायरेक्टर हो सकता है. फाइन मैम, बट वी ऑल्सो हैव अ सेबी लोडर रेगुलेशंस. ओके, सेबी लोडर में हम एक चीज और पढ़ते हैं एंड दैट इज कि कितनी मैक्सिमम कंपनीज में यू कैन बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इफ यू विल लुक एट द इंस्टीट्यूट्स आंसर, आई थिंक कुछ यहाँ पे भी गलत दिया हुआ है. द करेक्ट आंसर इज नॉट 10.
The correct answer is not 5, the correct answer is 7. ठीक है, तो इसको इसीलिए मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53. For recognition of stock exchange, application by stock exchange has to be made to central government or SEBI or RBI or none of the above. Again, a question which can confuse you a bit क्योंकि हमें लगता है if we are making an application कि हम एक stock exchange बना रहे हैं and we want recognition because unless we are recognized we cannot practice as a stock exchange. So we want this recognition. A stock exchange market is being regulated by SEBI. So ultimately we should send an application to SEBI और SEBI ही हमको recognition grant करेंगे, but it is not so. Grant of recognition, making an application, then grant and then renewal and all that part is an integral part of the chapter, है ना? Yes, I have given the answer key at the end of the PDF, don't worry. ठीक है, बट उसमें ना कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इनकरेक्ट भी हैं, तो मैं क्लास में कराती जा रही हूँ, वहाँ पे आपको एक आध क्वेश्चन कुछ गलत भी हैं, मतलब उसके आंसर गलत दिए हुए हैं. ओके, चलो. So the correct answer for this one is not SEBI, not RBI, but it is central government. Central government को हम application देते हैं for recognition. मार्क कर लो, जिसने भी ये गलत लिया है ना, मार्क कर लो इसको भी. चलो, एक बहुत इजी सा क्वेश्चन नंबर 54 पता होना चाहिए आई थिंक आपको. आईपीओ में जब इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है ना, तो हमारी शेयर होल्डिंग का पैटर्न होता है दैट दीज मेनी शेयर होल्डर्स दीज मेनी शेयर्स शुड बी हेल्ड बाय द प्रमोटर्स ऑल्सो. तो प्रमोटर्स के जो मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज व्हाट, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल, 10%, 20%, 30% or 40%. Quickly. It is something that either you know or you don't know. If you don't know, then learn it. If you know, then answer it. फटाफट से देखूं मैं. ओके, सो आई हैव नॉट गॉट मेनी वोट्स. या तो आ नहीं रहा है या तो बता नहीं रहे हो. बता नहीं रहे हो तो इतनी भी क्या नाराजगी है, बता दो. 140 votes I have received so far. चलो, the correct answer is B. Okay, चलो. Question number 55. Question number 55. 55 को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ आपके लिए. लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड द पोल विल बी लाइव. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर इट. अदरवाइज आई विल सिंप्लीफाई द क्वेश्चन अ बिट फॉर यू. In case the issuer opts for alternative method of book building, the issuer may offer specified securities to its employees at a price lower than the floor price. However, the difference between the floor price and the price at which equity shares and convertible securities are offered to employees should not be more than how much percentage of the floor price? 10%, 5%, 15%, or 20%. So that is the question over here, right? Now, if I simplify it, maybe you can write it other way also. The cap on the price band, shall not be, or you write it shall be less than equal to dash percentage of floor price. कुछ बच्चों को पता है ऐसा मुझे लग रहा है, और even if it is a wild guess, it is a correct guess because the answer is 10%. Moving to the next question. A question about depository receipts again. Let the poll be live for question number 56. बहुत basic question and for which you do not need knowledge at all. ठीक है, मतलब बस पता है कि depository receipts क्या होते हैं, तो you will be easily able to answer this one. That's what I'm saying, Shrikant. पता नहीं, I think around 200 students are sleeping. They're not participating in the votes. But ठीक है, if it is beneficial for them, तो बहुत अच्छी बात है. चलो.
A foreign company can access Indian securities market for raising funds through issue of GDR, FDR. FDR तो हमने पढ़ा ही नहीं है. Foreign depository receipts क्या होते हैं? मतलब either it's American or it's global. And Indian depository receipts, right? So these are the 4 options which are given to us. Question नहीं दिख रहा? Question तो दिख रहा होगा यार. अभी दिख रहा है. चलो. So I have already got around 170 votes. And the correct answer is what you have given me. It's Indian depository receipts. Simple. Listed entity. चलो अब फटाफट जो हमारे अगले 2 क्वेश्चन है उसकी पोल बहुत आराम से और बहुत मतलब एकदम इट हैज टू बी वेरी क्विक बिकॉज दे आर इजी क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 57. एक लिस्टेड एंटिटी क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करती है ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ क्वार्टर. विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ क्वार्टर. यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी. चलो नेवर माइंड, लेट्स सी. संदीप मैंने इस ना पॉइंट को एड्रेस भी किया हुआ है बिकॉज आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये थोड़ा सा ना इशू रहता है कि इंस्टीट्यूट में कुछ गलत क्वेश्चंस दिए हुए हैं बट दे आर एरर्स. डोंट कंसिडर देम एज द फैक्ट्स दैट इंस्टीट्यूट हैज रिप्रेजेंटेड. नो, द इंस्टीट्यूट इज utmost observes utmost care in designing your paper as well as checking. So just have faith in the institute कि कुछ भी गलत अगर हो सकता है तो वो materials में हो सकता है, not in the examination paper. Okay. Fine. Chalo, I think question number 57. Some students have given me the answer 30 days. Some have given me the answer 15 days. Let me tell you, 15 days is the earlier limit which was there. We have 21 days now. Okay. So 21 days you have to keep in mind. It doesn't matter इन सारे टाइप के क्वेश्चंस विच यू आर अनएबल टू एड्रेस राइट नाउ, उनसे कोई भी डिप्रेस होने की या फिर अपना कॉन्फिडेंस लूज करने का पर्पस नहीं है. इफ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते हैं, आपको लगता है अरे यार ये कहाँ है, अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ऐसा कुछ भी अगर थॉट आता भी है दिमाग में, जस्ट डोंट इग्नोर दैट थॉट बट डोंट इग्नोर द क्वेश्चन. मार्क द क्वेश्चन एज अ स्टार. 2 दिन है ना, 2 दिन में उसको 4 बार पढ़ोगी, यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन. ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें हो सकती हैं विच आर आस्क्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. अब इंस्टीट्यूट की बुक में कुछ और लिखा है, वैसे कुछ और है, कुछ चीज़ें लिखी ही नहीं है फिर भी पूछ रहे हैं, तो वी कैन नॉट इवन से कि इंस्टीट्यूट का ये सब कर लो तो सब सही है. भाई सारा पढ़ लो तो भी शायद सही नहीं है. सो डोंट पैनिक, डोंट गेट कंफ्यूज और अपना कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी लूज नहीं करना है. अगर कुछ इस तरीके के क्वेश्चन, इसीलिए मैंने चुन चुन के इनकॉर्पोरेट करके डाले हैं ना, ताकि आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम ना. तो जितना चीजें हम कर सकते हैं अपने एंड से एफर्ट नहीं छोड़ना है. फाइन, चलो ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 58. द पोल इज ऑलरेडी लाइव. इन केस ऑफ एन आईपीओ द इशू शैल बी ओपन फॉर मिनिमम हाउ मेनी डेज. इजी क्वेश्चन. इसमें तो यार करेक्ट दे दो आंसर. 3, 5, 7, 10. हाँ, ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे. 3, 5, 7, 10. Come on, students. This is an easy one. This is an easy one. Okay, around 150 votes. Well, the correct answer is 3. Chalo. Competition Commission also has the power to impose fine. Question number 59. Question number 59. Exactly. The ones who are actually applying for IPO and part of stock exchange, so they are more interested and inclined. तो उनको पता होते हैं ये वाले answers. खैर, Competition Commission of India, we are talking about Competition Act. They have the power to impose fine. See, whenever we enter into combination, see there are exceptions, there are regulations. हम सारे regulations की बात नहीं कर रहे हैं. So let's not confuse the students right now at all. It is not just one law which governs the whole nation, right? तो बहुत सारे laws होते हैं, subject to these provisions, subject to that provision, notwithstanding. So we have ample of things.
Competition Commission of India has the power to impose a fine which may extend up to what percentage of total turnover or the assets of the combination, whichever is higher, for failure to give notice. What is it talking about, ma'am? Whenever we enter into a combination, we send a notice to the Competition Commission of India, है ना, कि हम कर रहे हैं, and they are given 210 days time. If they have objection, they have to raise that objection within 210 days. Otherwise, it is deemed as the approval from CCI, है ना, and then we can proceed with the combination. We don't have any problem. ठीक है, चलो, don't stop discussing stock market over here. चलो, question number 59. What is the percentage which is given to us? कितने percentage तक की penalty हो सकती है? It's not 2%, it's 1% as far as I know. Let me see what has the institute given us. Now it's 1% only. चलो. Okay. Fine. Next question. Okay, fine, Princey, I will do that. I think you're talking about the correction, making corrections in the answer, right? So I'll do that. Fine. Next question का आंसर मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है. Although the poll is live, so you can quickly answer it. नहीं तो मैं poll क्या करूंगी, फट से end करने वाली हूँ. If the commission does not, on the expiry of how many days from the date of notice given, passes an order, it shall be deemed to be the approval. तो अभी मैंने ये चीज़ आपको बता भी दी कि हम नोटिस भेजते हैं इंस्टीट्यूट को, वो इंस्टीट्यूट सुन के ना, CCI को कुछ टाइम पीरियड मिलता है, that within that much time period you have to raise any objections if you have, otherwise it will be deemed approval. So what is the number of days? 210 days. We move to the next question. The next question also, I'm not creating the poll. We'll straight away create the poll for question number 62, because एडा फंड में क्या क्या चीजें चाहती हैं? इट्स ऑल ऑफ द अबव अनडाउटेडली, एंड यू ऑल नो दैट. सारे गवर्नमेंट ग्रांट्स, द परसेंटेज ऑफ प्रिस्क्राइब प्रीमियम, सम्स रिसीव फ्रॉम द अथॉरिटी, सो एवरीथिंग गोज. Question 61, the correct answer is D. We move to question number 62. ध्यान से सोच समझ के. Question number 62. Question number 62. ADA shall, within how many months after the close of financial year, submit to CG a report giving true and full account of its activities, including the activities for promotion and development of insurance business. तो ADA report submit करती है CG को, but within what time period? Within how many months? ये जितनी भी ना इंस्टीट्यूट ने वो दिए हैं आपको, ये इतने टाइम में करो, उतने टाइम में करो, तो मैं तो स्टार्ट से बोलती हूँ, बुक में पता नहीं आपने हाईलाइट अभी तक किया है या नहीं किया, बट अगर नहीं किया है ना तो भी एक बार गो थ्रू द मटेरियल, हाईलाइट ऑल द टाइम लिमिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. 9 months. Next question, question number 63. The principle of what ensures that an insured does not profit by insuring with multiple insurers? Subrogation, contribution, co-insurance, and indemnity. See, a lot of insurance holders, अब मैं भी ऐसे सोच सकती हूँ कि एक काम करती हूँ ना, इस कंपनी से भी इंश्योरेंस ले लेते हैं, इस कंपनी से भी ले लेंगे, जब आग लगेगी ना, अगर गोडाउन में आग लगती है तो इस कंपनी को भी बुला लेंगे, इस कंपनी को भी बुला लेंगे, दे विल ऑल्सो गिव अस 10 लाख एंड दे विल ऑल्सो गिव अस 10 लाख, विल आई हैव 20 lakhs. तो हम ये बिजनेस ही कर लेते हैं, बार बार क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, आग लगाते हैं, 4-5 कंपनी से क्लेम ले लेते हैं. डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल? वेल द आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल, मैम. By following which principle it is not possible? Is it subrogation? Is it contribution? Is it co-insurance? Co-insurance is not taking from, okay, तो ध्यान से. Or is it indemnity? बच्चों को लगता है कि हाँ subrogation हो सकता है, थोड़ा अलग सा फैंसी सा वर्ड लग रहा है, but let me tell you, if I talk, it's ideally contribution. Okay. कंट्रीब्यूशन की प्रिंसिपल हमें ये बोलती है दैट वी विल गेट प्रोपोर्शनेट कवरेज ओनली. दैट मीन्स वी कैन नॉट बी इंडेमनिफाइड फॉर मोर देन द लॉस इनकर्ड. If we have incurred the loss of 10 lakhs, so we will be indemnified for 10 lakhs only. Okay, so ideally it's the principle of contribution. Subrogation की principle is slightly different. Subrogation is involved
जहाँ पे थर्ड पार्टी होती है, जैसे ये दो लोगों का डैमेज हुआ. Now, this particular party has taken insurance. So, this particular party will get the claim, but the insurance company will take claim from the third party because he was responsible or she was responsible for this. Okay. So, I think थोड़ा सा confusion clear हो गया होगा. चलो. Question number 64. Question number 64. A very easy question. I want 100% स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट. चलो अब मैं इसको ना थोड़ा सा होल्ड डालूंगी यार, ऐसे मत बोलना मैम जल्दी करो, मुझे 2-4 मिनट देना इस वाले क्वेश्चन में. बहुत इजी क्वेश्चन है एंड आई हैव अराउंड 400 स्टूडेंट्स, है ना, थोड़े से ऊपर नीचे होते रह रहे हैं, बट अराउंड 400 स्टूडेंट्स हमारे इस सेशन में कनेक्टेड हैं. सो आई वांट एटलीस्ट 300 स्टूडेंट्स टू वोट फॉर दिस वन एंड प्लीज नो राइटिंग ऑफ आंसर्स इन चैट. ओके, वी हैव पोल टू आंसर. आई थिंक तान्या ना ये चीज कम से कम 10 से 20 बार लिख चुकी होगी, बट नोबडी इज लिसनिंग. मैम यू लुक सो क्यूट व्हेन यू से अरे बाबा. हाँ, ओके. सो आर पोल इज लाइव फॉर क्वेश्चन नंबर 64. कंपनीज एक्ट में स्मॉल शेयर होल्डर क्या होता है? एज अ शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर दैन. I have got only 200 votes so far. मैं रुकी हुई हूँ. I want at least 300 students to vote for this. 300 तो ज़्यादा बोल दिया क्या? Please don't write answers in the chat. I want every student to participate. थोड़ी देर में पोल ये वाली रहने देना चाहती हूँ because I actually want to see कि हाँ कितने generally students भाई कर रहे हैं. If any answer is wrong in study material, institute will check according to that or it will give marks for the right answer. Of course, for the right answer. इंस्टीट्यूट के मटेरियल में अगर कुछ गलती हो गई इसका मतलब ये थोड़ा ना कि एग्जामिनेशन के सजेस्टेड आंसर में भी वो गलती हो गई है. और अगर सजेस्टेड आंसर में गलती होती है एंड इट्स आइडेंटिफाइड, देन फॉर श्योर यू गेट मार्क्स स्ट्रेट अवे. Then so you focus on writing the correct answer only. Don't focus on learning all the wrong answers कि हाँ इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे ये गलत बताया, वहाँ पे वो गलत बताया, तो यहाँ पे मुझे ये याद रखना है, वहाँ पे मुझे ये याद रखना है. एंड इफ द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड एट 2 different places, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो फिर क्या याद रखोगे? ओके, चलो. अरे आई हैव रिसीव्ड अराउंड 253 votes so far. 255. मुझे लग रहा है अब बच्चे बड़े ठंडे ठंडे से बैठे हैं और मेरे जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इनजस्टिस होने लगेगी. तो चलो 255 वोट्स पे ही मैं एंड करती हूँ ये पोल. एंड येस, यू हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर अनडाउटेडली. आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन यू दिस एट ऑल. द करेक्ट आंसर इज 20,000. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 65. CSR committee shall have at least how many independent director? CSR committee shall have at least how many independent directors? 1, 2, 3 or not required? CSR committee में there are 3 or more directors. 3 or more directors, out of which at least how many shall be independent director? This is the question. ये वाला blank भरना है आपको. Out of that, at least how many shall be independent director? Option number A 1, B 2, C 3 and D not required. 1. Very good. चलो, अब वोट्स अपने आप ही बढ़ गए ना. फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो आई हैव रिसीव्ड अराउंड 250 वोट्स. सबको बूस्ट करना पड़ता है ना, इवन फॉर राइटिंग योर ओन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 66. देखो, देयर आर 2 terms in the chapter of directors. One is manager and one is managing director, which slightly mean which have different meanings, I would say. But इसकी पोल लाइव कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 66 की. हाँ, which have different meanings although, but कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सेम होते हैं. We say that a company cannot have MD and manager at the same time.
कई बार the students get confused in the definition of manager as well as managing director. So you have to carefully read and understand and try to recall the definition. Dash means an individual who, subject to the superintendent's control and direction of board of directors, has the management of whole or substantially the whole of the affairs of the company. So what is the correct answer? Is it managing director? Is it manager? Is it both B and C above? Or is it just the director? Is it just the director? I think there is another question which is there for managing director or manager. मैंने इसी फाइल में ही डाला हुआ है. Exactly मुझे याद नहीं आ रहा, but anyways, the correct answer to this question, कुछ बच्चों को ठीक मिला है, is C, managing director. I think I have incorporated. Okay, as in when it comes, I'll discuss that as well. Question number 67. Come on, farafat. Majority of the members of the audit committee shall be. Audit committee section 177 में बनती है and section 177. The majority of the members of audit committee shall be full-time directors, nominee directors, promoter directors, or independent directors. कितने votes है? Full-time directors, nominee directors, promoter directors, or independent directors. Please actually vote on polls only. The majority of the members of audit committee shall be independent directors. Question number 68. The dash shall satisfy itself on the need of omnibus approval of transactions of a repetitive nature and that such approval is in the interest of the company, board of directors, audit committee, management committee, and any of the above. Section 177. Section 177. Law के सेशन में लॉ का कॉन्ट्रोवर्शन, प्लीज वोट ऑन पोल. एक्चुअली सेक्शन 177 में ऑडिट कमिटी क्या करती है? फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आप एक ऑमनिबस अप्रूवल ले सकते हो. दैट मीन्स यू कैन टेक एन अप्रूवल प्री हैंड फॉर एन ईयर और उसके बाद यू कैन एंटर इनटू द रेपिटेटिव टाइप ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, राइट? बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट अप्रूवल? कौन सेटिस्फाई करता है? Is it the board of directors? Is it the audit committee? Or is it the management committee? Or any of the above? कोई भी कर सकता है. I think काफी हद तक स्टूडेंट्स को पता है, बट why are you so confused? मतलब अभी भी बच्चों का कुछ आ जा रहा है ऐसे, any of the above भी आ जा रहा है, तो कहाँ है? थोड़ा सा फोकस लेके आओ, फोकस मेंटेन करो. ठीक है. ऑडिट कमिटी. एक जो ऊपर क्वेश्चन था इसमें आप क्वेश्चन नंबर 66 जो मैंने कराया है, कंसीडरिंग की जो एग्जैक्टली वर्डिंग्स लिखे हुए हैं, दैट अनडाउटेडली गोज टू से कि ये मैनेजर ही है. वो आंसर इसका भी मेरे ख्याल से कुछ गलत दिया हुआ है, तो इसको आप प्लीज रेक्टिफाई कर लो. क्वेश्चन नंबर 66, द आंसर वुड बी मैनेजर ओनली, बिकॉज जो जितना पार्ट ऑफ डेफिनेशन दैट वी आर एबल टू रीड, दैट गोज विदाउट सेइंग कि हाँ इसको हमें मैनेजर ही कंसिडर करना चाहिए. ठीक है, तो एक बार इसको रेक्टिफाई कर लेना क्वेश्चन नंबर 66 का. क्वेश्चन नंबर 69. मैम डर लग रहा है. ऑमनिबस इज अ वन टाइम अप्रूवल समझ लो आप. Dash means any director whose presence cannot be counted for the purpose of forming a quorum at the meeting of the board at the time of discussion or vote on any matter. Question number 69. Question number 69. अच्छा, I think some of the students even said this. चलो अच्छी बात है. It's more important.
that you should know it. Question number 69. 94 votes so far. आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और सबको लग रहा है कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर है. हम इसको वाइंड अप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को एंड वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 70. लास्ट के 10 क्वेश्चंस हमारे बचे हैं. द जोश शुड बी वेरी 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 हाई एंड एवरीवन शुड पार्टिसिपेट. उसके बाद आई विल ऑफ कोर्स डिस्कस सम जनरल थिंग्स एंड देन वी हैव अदर 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस. उसको मैं एक बार बस आपको ओवरव्यू कराऊंगी because they are all kind of direct questions. Let's come to that later. We have 10 more MCQs remaining and come on everyone. Keep the josh high. Please don't lose the confidence. डरना थोड़ा डर अच्छा होता है but ज़्यादा डरना नहीं है. Question number 70. IBC is not applicable on whom? On partnership, individuals, companies, LLP or the financial service providers. Although we haven't read about IBC applicability on the individuals and partnership firms, हमने सिर्फ corporate insolvency resolution पढ़ा है. We have not read about the individual insolvency, but yes, it is applicable. That you know very well. Applicability तो हमने discuss की ही है. So IBC is not applicable on financial service providers. So the correct answer is A. Question number 70, the correct answer is A. The Insolvency and Bankruptcy Board has a power of which court in respect of issue of summons, discovery, production of books? So we discuss that it has the same powers as of Nivetha. I have already rectified that one. See, if you look at question number 66, the correct answer is manager only. Okay, so don't worry about that. Right, I'm glad that the Josh is high. We are discussing question number 71. The IBC has the powers the same as of a session court, high court, supreme court or civil court. A general question. A general question. It will get the same powers as of which court while trying a suit? That is by calling someone or by asking for them to produce their books or inspecting their books. It is going to be civil court. Okay? Civil court. चलो. Next question की मैं पोल चाहती ही नहीं हूँ कि create हो. Because undoubtedly insolvency professional agency who can become cost accountants का institute, chartered accountants का institute, company secretaries का institutes, they all can become, they all have become, right? तो ये सब बने हुए हैं. Next question, again I think इसका भी आंसर कुछ गलत दिया हुआ है. Question number 73, इसकी पोल live हो and again manager is correct. Question number 73. I want the poll to be live and again I want at least 250 students to participate in the poll for question number 73. A very easy question. According to section number 43 of Companies Act 2013, how many types of share capital exist? कितने तरीके के share capital हैं? नहीं, powers मिलती हैं as that of a civil court. According to section 43 of Companies Act 2013, how many types of share capital exist? Session courts are civil only. मतलब civil criminals सब होते हैं, but they are in the same league, I would say. Okay, question number 73. Come on, I'm waiting. At least 250 students should participate in this poll. बहुत इजी क्वेश्चन है. कितने तरीके के शेयर कैपिटल होते हैं? डोंट लुक एट द आंसर ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड डोंट राइट द आंसर्स इन द चैट प्लीज. अब किसी का आएगा ना तो नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू टेक एन एक्शन, विल ब्लॉक, फिर सब सीधे हो जाएंगे. 210 वोट्स सो फार, बट इसमें भी आप लोगों को कंफ्यूजन है. आई एम रियली सरप्राइज टू सी दिस. Section 43. How many types of share capital exist? कितने तरीके के share capital हैं? Kinds of share capital. आप लोग प्लीज ये सब तो नहीं सोच रहे हो ना कि ऑथराइज्ड कैपिटल होता है, इशूड कैपिटल होता है, पेड अप होता है, सब्सक्राइब्ड होता है, कॉल्ड अनकॉल्ड, ये सब, और इसको काउंटिंग कर रहे हो और उसके बाद 9 और 3 ऐसे कुछ निकाल रहे हो. नो, यू डोंट हैव टू डू दैट माय डियर. अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट दिस इज नॉट द क्लासिफिकेशन. हमारे पास सिर्फ 2 तरीके के शेयर कैपिटल होते हैं, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस, राइट?
It could be with DVR, without DVR, if I'm talking about equity shares, but we have prima facie only two types of share capital. Okay, तो correct answer हमारा क्या है? It's C. Although I have received 250 votes, but only 40% students could give me the correct answer. So चलो खैर आगे बढ़ते हैं. Question number 74. Question number 74. Which among the following cannot initiate insolvency resolution process as per IBC? A financial creditor, an operational creditor, corporate debtor, and registrar. So we have these four options. मैम आप बोल बोल के थक गई पर कोई सुन ही नहीं रहा. बताओ, अब मेरी नहीं सुन रहे तो अब क्या कर सकते हैं यार. तानिया, मैं और आप दोनों बोल बोल के थक गए. अब एक्चुअली आई डोंट वांट टू डू दिस कि इस समय मैं ऐसे ना स्टूडेंट्स को ऐसे ब्लॉक कर दूं, तो ये मैं चाहती नहीं हूँ बिकॉज यू हैव योर एग्जाम्स. बट नेक्स्ट टाइम वी आर टेकिंग अ लाइव सेशन, और अगर किसी का भी ऐसे आया ना विदाउट पोल्स, तो वी आर पक्का गोइंग टू ब्लॉक इट. फिर वो रिक्वेस्ट करेगा, फिर वो सॉरी बोलेगा, तब हम उसको अनब्लॉक करेंगे. चलो, क्वेश्चन नंबर 74. See, financial creditor can make an application, operational creditor can make an application, and even corporate debtor himself can also make an application. So who cannot? अरे पेरेंट्स को कंप्लेन करने का जमाना गया बेटा. वो अलग युग में होता था, आज तो मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स को कंप्लेन करके भी कुछ होता है. एनीवेज, यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर. कुछ बच्चे ऐसा भी सोच रहे हैं मैम इतने इजी क्वेश्चंस आएंगे क्या. हाँ, कुछ इजी कुछ डिफिकल्ट. ठीक है, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट. चलो, आई एम ग्लैड कि इस क्वेश्चन पे किसी ने भी चैट पे नहीं बोला. चलो, कुछ तो असर हुआ है मतलब. क्वेश्चन नंबर 75. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट. जैसे ही मैंने बोला किसी बच्चे ने कर ही दिया. The amount of any interim finance and the cost incurred in raising such finance, any cost incurred at the expense of government to facilitate IRP, any cost incurred by the resolution professional in running the business, and dividend. ये चार चीजें होती हैं. See, even if you haven't read the provision, but still if you read this question, you will be able to answer this. फिर से पढ़ो और फिर से सोचो कि ठीक है, हमने कुछ इंटरम फाइनेंस, वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अ कंपनी, एंड इन डूइंग सो कुछ बीच में फाइनेंस लेना पड़ा, उसकी कुछ कॉस्ट आई, या गवर्नमेंट को इस प्रोसेस में कुछ कॉस्ट लगी, या फिर आईआरपी को लगा कि नहीं मुझे बिजनेस रन करने के लिए कुछ कॉस्ट करनी पड़ी, या फिर डिविडेंड देने के लिए. नाउ थिंक अबाउट इट. I think you have thought about it because around 180 votes and the correct answer. 90% students have given me the correct answer. That is dividend. भाई डिविडेंड देने के लिए थोड़ा ना IRP के कॉस्ट है ना. मतलब कंपनी डूब रही है पर यहाँ पे डिविडेंड देना है, और डिविडेंड को इतना इंपॉर्टेंट कंसिडर करना है नहीं. इतनी इज्जत हम डिविडेंड को नहीं देते अनलेस वी आर एन इन्वेस्टर. चलो, क्वेश्चन नंबर 76. SEBI announced plans to tighten regulations for which type of trading. कौन सी ट्रेडिंग के ऊपर इतने स्ट्रिक्ट नियम बनाए? Algorithmic trading, investor trading, spot trading, or none of these. For those who do not know what algorithmic trading is, it simply means automated. है ना, जैसे हम प्री फीड कर देते हैं ना सिस्टम पे कि इतने प्राइस आए तो इतने शेयर्स खरीद लेना. वहां पे क्या हो जाता है, मशीन वाली चीजें हो जाती हैं, तो वहां पे मार्केट अलग तरीके से फ्लक्चुएट करता है. ठीक है, सो दैट इज समथिंग. अब आपको सोचना है कि वो क्या करना है. तुक्के लगा रहे 80% स्टूडेंट्स, मुझे भी ऐसा लग रहा है, बट एज लॉन्ग एज आपके तुक्के सही लग जाए एग्जामिनेशन में, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि कंसेप्ट तो डेवलप करने का अब समय गया. राइट, ऑटोमेटेड प्री प्रोग्राम्ड ट्रेडिंग इंस्ट्रक्शंस जो हम दे देते हैं, दैट इज एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग. लेट्स सी व्हाट द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड. 181 वोट्स आए हैं, बट सम मिक्स्ड वोट्स आए हैं. घोर निंदा करती है सेबी इस तरीके की ट्रेडिंग की. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम काट दे रहे हैं.
क्वेश्चन नंबर 77। बस आपको इतना याद रखना है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है आपके साथ, कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हमारा रीनेम हुआ था, इट इज रीनेम्ड एज इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो यू हैव टू समहाउ कीप दैट इन माइंड। एंड नाउ वी हैव 1, 2 and 3, 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 3 questions, and at the end you have to tell me the scores. I don't know how many of you have noted the scores कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए या कितने क्वेश्चन गलत हुए, but let's see if anyone has, they can share it with us, but at the end, ठीक है, डोंट ब्रैग अबाउट इट कि हाँ मेरे तो 80 में 80 आए, नहीं, तो जो एक्चुअली ऑनेस्ट हो वो थोड़ा शेयर करना। ओके चल, वैष्णवी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस अटेम्प्ट के लिए तो हम 1 डे मैराथन डेफिनेटली अभी नहीं ले रहे हैं, बट आई हैव अ लॉट ऑफ रिविजन वीडियोज विच हैव बीन अपलोडेड, एब्सोल्युटली अमेंडेड वंस, और मैंने इधर रिसेंट के टाइम्स पे बहुत सारे डाले हैं, एंड इन द आई वुड से क्विकेस्ट मैनर एज पॉसिबल, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, मैंने ऐसी मैराथन बनाई है, मतलब मैराथन क्या, वो रिविजन वीडियोज बनाए हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी ऑफ योर टाइम। एंड इफ यू थिंक कि फिर भी लग रहा है कि थोड़ा सा स्लो जा रहा है, तो आप स्पीड इंक्रीज करके स्पीड वॉच कर लो, इट विल बी हेल्पफुल, राइट। एंड फॉर द ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो है ही चीजें। चलो खैर, 9 रॉन्ग, कौन सा 9 और रॉन्ग है हो रहा है, अच्छा, चलो, क्वेश्चन नंबर 78। In 2004, SEBI further amended Clause 49 in response to which committee's recommendation? 111 votes so far. Which of the following options, according to you, most appropriately fills the above blank? The correct answer is Murthy Committee recommendations. Question number 78, the correct answer is A. Question number 79. Banking Regulation Act. According to Banking Regulation Act, any banking company which is aggrieved by the decision, मतलब RBI ने आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, आपको अपना डिसीजन कम्युनिकेट किया, यू हैव एन ऑप्शन दैट यू कैन मेक एन अपील टू सेंट्रल गवर्नमेंट that we are not satisfied with this decision of RBI. How much time limit have been given to you? कितने टाइम लिमिट, क्या टाइम लिमिट दिया हुआ है, दैट विद इन हाउ मेनी डेज यू मस्ट अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट? सो विच ऑफ द ऑप्शन अप्रोप्रिएटली फिल्स द अबव ब्लैंक? इज इट 90 days, 60 days, 45 days, or 30 days? Okay, out of 78, 9 wrong. Good, very good. So after 80 questions, you just calculate the correct ones and tell me that score. Okay. चलो, इन्फोसिस, अरे बाप रे, मुझे कभी कभी लगता है कि आप लोगों का दिमाग मुझसे कुछ ज्यादा ही चलता है। द करेक्ट आंसर, कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर इट, 127 votes so far. The correct answer is 30 days. Last question. The framework for establishing good corporate governance and accountability was originally set up by which committee? Thank you so much, Sai Kumar. Madam, for CMA final law subject, you are the number 1 faculty. Thank you. Okay, now the last question. Question number 80. Ma'am, as I am a CA, I know basics but didn't read anything. Please suggest what can I study in 2 days? Oh my God, Ronak. I really don't have anything to advise you as a part of selective study, because the curriculum is slightly very different. But I would suggest that if you have 2 days, it's better that you don't go into the core content, but rather review the questions. Okay, review the latest questions, review all the MTPs, review the past papers, and that is something which will give you an idea that what topics are important and what topics are not important. And basically in that question, if you find anything that I'm unable to understand, you can focus on that. Okay, if I tell you, because CA course is the comparatively very less in comparison to CMA final course. CMA final course has a lot of more content and different content, I would say, and the questions are also asked in different perspective. Okay, because in CA you have a lot of case studies, but here you don't have a lot of case studies. You need to know the things in different manners. So I would suggest you to review more questions. Okay, I think the last question chat is also completed. I didn't even see the chat.
Okay, around 203 students have voted. And what have you given the correct answer? Okay, B. Yes, yes, very good. The correct answer undoubtedly is B only. Thank you so much, ma'am, for conducting this session. Frankly speaking, we will do not this in our on our own if you haven't. Okay, thank you so much, Vaishnavi. Madhu, I have taken Xerox of your material and ignored the institute material. Perfect. That's not a problem. I'm grateful to you, ma'am. God bless you, ma'am. मैम आप जैसे लिख के प्रोविजन बताते हो, it makes them easy. आपके स्टाइल में बुक लिख दीजिए हमारे लिए. Okay, you have my charts, you have my book. Thank you. The kind of live session will boost the confidence to appear. Thank you. अरे बाबा रे, इतना जल्दी जल्दी मैं पढ़ भी नहीं पा रही. थैंक यू मैम, इट वाज ग्रेट कॉन्फिडेंस बूस्टर सेशन. मतलब अब आप लोगों ने पूरे जाने की तैयारी कर ली. मैंने बोला क्या सेशन हो गया. हाँ, चलो थैंक यू एवरीवन. थैंक यू फॉर सो मेनी काइंड वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन. बहुत अच्छा लगता है. दिस इज एक्चुअली ऑल वी नीड. ओके, चलो, बहुत 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 अच्छी बात है. आई एम ग्लैड दिस वाज हेल्पफुल एंड यू आर इवन शेयरिंग द स्कोर. सम स्टूडेंट्स हैव इवन गॉट 70 प्लस आउट ऑफ 80. वेरी हैप्पी टू नो दिस. चलो, even if you have got 65, very good. So out of some 80 questions जो हमने पूरे syllabus में से कुछ selected students compile किए थे, selected questions, you have done them well. अच्छा, लंच ब्रेक अपने आप सब 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 चीज़ें मान लो. थैंक यू, यू आर अ जेम फॉर अस. ब्यूटी विद ब्रेन. बस हाँ, हो गया. ठीक है. आई एम रियली थैंकफुल, आई एम रियली ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू कि आप लोग इतने एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हो. बट नाउ listen to me very carefully. You have to focus on your examination. मैं फिर से एक बात बता दूं, although I will come up with a tips, a quick tip session, in fact a very short video for the last minute tips before your examination, and I insist each student to please watch it. मैं कुछ चीज़ें उसमें आपको बताऊंगी. But even for your preparation for the coming 2 days or 2.5 days, whatever it is, I want you all to understand कि बहुत आराम से प्रिपरेशन करनी है. हो सकता है आपने कंसेप्ट जो पढ़े हो बहुत डीप रूटेड कंसेप्ट्स पढ़े हो, बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. बिकॉज व्हेन यू आर एट द फाइनल लेवल आप कोई प्राइमा फेसी नॉलेज ऑब्टेन नहीं कर रहे हो, बहुत इन डेप्थ नॉलेज ऑब्टेन करते हो. सो यू माइट हैव लर्न द कॉन्सेप्ट्स इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर, विच इज ग्रेट. But let me tell you that just before your exams, don't go into those intricate details. कि मैम ये अगर ऐसा होगा वो वैसा होगा तो वो क्या होगा. नो, डोंट. ठीक है. राइट नाउ यू फोकस शुड बी जस्ट, इन फैक्ट इफ यू वांट टू फॉलो द टाइमलाइन कि कितने टाइम में कौन सा चैप्टर हो जाना चाहिए, वो आप जो मैंने वीडियो पुश किया है यूट्यूब पे सेशन शेड्यूल वाला, उसको देख के अभी आप कर सकते हो, या यू कैन फॉर्म योर ओन शेड्यूल. आपको करना क्या है, यू हैव टू एंश्योर इन द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस कि हाँ IBC पता है. ठीक है, इंस्टीट्यूट उतना फॉलो करे या नहीं करे, वी नो कि हाँ 10 नंबर का क्वेश्चन आता है. द चैप्टर ऑफ डायरेक्टर्स, वो 3 चैप्टर कंबाइन करके एक चैप्टर हमारा. कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मेनी स्टूडेंट्स फ्राउन अवे फ्रॉम कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बट ट्रस्ट मी इट इज द मोस्ट स्कोरिंग थिंग एवर फॉर यू. बिकॉज वहां पे ना कुछ सोचना ही नहीं है, वहां पे चीजों को बस याद कर लेना है, थोड़ा सा दिमाग में भर लेना है. सो द डेट्स, the limits, and जैसे OECD principles है, the direct questions which are asked in the topic of corporate governance are very important. Okay, so you have to keep that in mind. Now I am not giving you any break right now because हमारा ये session सिर्फ 10 मिनट और चलेगा. Please focus. I am only here to guide you. ये जो हमारे questions हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, कंसीडरिंग द न्यू पैटर्न, हैव टू बी आंसर्ड इन 1 line, 2 line, 3 line, or if it is a definition, then of course maximum the definition covering part. You don't have to elaborate the answers for these short questions. They have to be clear, they have to be straight. ठीक है. सो वी हैव सम क्वेश्चंस एंड ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. तो ना तो मैं आपसे इस समय बोल सकती हूँ कि आप बैठ के इसको टाइप करो चैट में, और ना तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हाँ सिक्योरिटाइजेशन, दिस इज सिक्योरिटाइजेशन. नो, यू ऑलरेडी नो दैट. दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम फ्रॉम माई एंड. तो मैं आप स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ. बट येस, आई हैव कंपाइल्ड दीज क्वेश्चंस फॉर यू दैट यू रिव्यू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड चेक योर ओन सेल्फ कि हाँ
कैसे एसेस करना है हमें, हाउ मच वी आर एबल टू आंसर. सो इफ यू डोंट हैव द पीडीएफ राइट नाउ ऑल्सो, मतलब अभी तक आपके पास नहीं है, तो टेलीग्राम चैनल से आप ये पीडीएफ ऑब्टेन करो. कंप्लीट योर थॉरो रिविजन, पहले पूरा का पूरा रिविजन करो एंड देन रिव्यू दीज क्वेश्चंस. यू डोंट हैव टू रिव्यू दीज क्वेश्चंस राइट नाउ. ओके, तो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे एनसीएलएटी का कॉम्पोजिशन, कि इसमें क्या होता है. सो यू हैव टू राइट कि हाँ इसमें चेयरपर्सन होता है, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, टेक्निकल मेंबर्स होते हैं. इफ इट इज आस्क्ड अबाउट एनसीएलटी देन यू विल राइट हाँ इसमें प्रेसिडेंट होता है, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं एंड टेक्निकल मेंबर्स होते हैं. सो यू हैव टू एंश्योर कि हाँ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, सीएसआर का क्या है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, एक बार रिव्यू करना. एंड एज फार एज द लॉन्ग क्वेश्चंस आर कवर्ड, इसमें भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डाले हैं. लिस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मोड्स ऑफ ई गवर्नेंस वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कुड बी एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दिस कुड बी अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल्सो. तो कहीं ना कहीं ये पूछ ही लेता है इंस्टीट्यूट इन चीज़ों को. ठीक है, तो ये हमारा कॉम्पोजिशन जो अभी मैंने डिस्कस किया, द रूट्स फॉर एफडीआई की कैसे आ सकता है. So I have incorporated some long questions. This very important. So I have incorporated some long questions, some short questions in this PDF. ये मैं discuss नहीं कर रही हूँ because obviously it will be a waste of time. Yes, I can understand that as a student हो सकता है आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में डाउट हो. जैसे एक हमारे पास शायद एक बच्चा आया था रचित, जिसको वो डाउट था कि प्रोड्यूसर कंपनी हमारे सिलेबस में है या नहीं है. सो इन केस यू हैव सच टाइप ऑफ डाउट्स, if you are my registered student, please contact me personally one to one. And if you are not my registered student, doesn't really matter, I'm here for you. You can drop in the comments to this particular video, we will check the same and reply as much as we can, considering our limitations also. ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, but after revising the whole subject. Okay, and as regards this important section list that we have made for you, this again will be shared to you by the end of the day, not right now that you resort to the selective study. No. So focus my dear. आपका game plan क्या होना चाहिए? अब सबसे पहले thorough revision, सबसे पहले thorough revision of the complete syllabus, then reviewing all the questions that I have given you and the questions which you have marked ever before. मतलब पहले भी आपने कभी लगा होगा ना कि ये क्वेश्चन में एग्जाम के पहले देख के जा सकते हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सो वॉट एवर यू हैव रिव्यूड, एंड आफ्टर दैट यू विल सी कि कहीं जो इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट मैम ने दी है उसमें से ऐसा तो नहीं कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुझसे छूट गया है. राइट, सो यू हैव टू चेक कि हाँ ये तो कम से कम आता है ना मुझे. एंड आफ्टर दैट देयर विल बी लास्ट मिनट टिप्स जो आप देखोगे, एंड विद अ वेरी काम एंड कंपोज्ड माइंड यू विल गो एंड रॉक इन द एग्जामिनेशन. फेमा छोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट मनोज, व्हेन आई शेयर विद यू द सेक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स, देन यू सी कि फेमा में मैंने क्या चीज़ मार्क की है एज द इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड उसको ज़रूर करके जाना. सो दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट, दिस इज नॉट द फर्स्ट रिजॉर्ट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट शेयरिंग इट राइट नाउ. ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी क्या पढ़ें उसकी भी मैं चीज़ बताऊंगी आपको. ओके, तो क्या पढ़ें ये चीज़ें मुझसे मत पूछो. आई हैव प्रिपेयर दिस लिस्ट बट आई एम नॉट शेयरिंग इट विद यू राइट नाउ. ऑफकोर्स भाई कितने लाइक्स वाइक्स हुए बता दो ज़रा. हमारा लाइक टारगेट अचीव हो गया तो बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं. आई थिंक येस वी कैन शेयर, बट स्टिल आई विल शेयर इट विद यू towards the end of the day only. Right now you please focus on all your concepts. Wish you all the very best. और जिसको भी नहीं मिल पा रही हैं चीज़ें, ये पीडीएफ नहीं मिल पा रही है, प्लीज़ आप सर्च करो टेलीग्राम पे CA शिवांगी अग्रवाल टाइप करो. इफ द लिंक इज नॉट वर्किंग डजेंट मैटर, यू विल get this right. Chalo. Okay, and keep yourself active on the telegram only. Please scroll down for screenshot. No, I'm not going to scroll down. No, I'm going to remove this actually. ये खैर मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ऐसा नहीं है. आप ही लोगों के लिए बनाई है तो करूंगी ही करूंगी, बट हाँ आप समझो कि मेरी भी अपनी एक प्रोसेस होती है. आई वॉन्ट यू ऑल टू डू दैट, राइट. तो वील शेयर इट ऑन द टेलीग्राम ओनली, नॉट अ प्रॉब्लम, राइट. चलो, 300 वोट्स हो चुके हैं. 99% स्टूडेंट्स वांट द पीडीएफ. ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू. चलिए, सो थैंक यू एवरीवन. ओके, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आई होप कि जब आपके एग्जामिनेशन के बाद वी हैव अ सेशन तो आपके जो
फीडबैक हो वो ऐसा ही हो, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर द पेपर, बट ऐसा हो कि हाँ मैम अच्छा हुआ एग्जाम, दैट गिव्स यू अटमोस्ट कंटेंट फीलिंग, है ना. चलो, वी आर एंडिंग द सेशन हियर इटसेल्फ. शॉर्ट टिप्स ऑन केस लॉस, चलो ये भी बता देते हैं. केस लॉस की अगर मैं बात करूं, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू लीव दे मे लीव. आई एम थैंक यू एंड आई एम डन फॉर द डे. इट्स जस्ट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस कि हाँ ठीक है केस लॉस कैसे लिखना है, कंसीडरिंग कि आप ऑनलाइन टाइपिंग करोगे. तो केस लॉस में यूजुअली हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बट हियर आई एम गोइंग टू एडवाइस यू ओनली 2 पार्ट्स, प्रोविजन एंड कंक्लूजन. Skip the analysis and given part, provision and conclusion. कोई भी आपका क्वेश्चन आएगा, सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू हिट कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस पार्ट से रिलेट करता है. सो विच एवर provision it relates to according to section. If you remember the section number, great. If you don't remember the section number, you can directly write the relevant provision states that. The relevant provision states that and write it. जितना हो सके ना एंटर करके थोड़ा पॉइंट्स में लिखना, ऐसे एकदम लंबा सा पैराग्राफ नहीं लिखना, थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे. एंड आफ्टर दैट बेस्ड ऑन द अबव या इन अकॉर्डेंस विद द गिवन सिचुएशन, ये हमारा कंक्लूजन है दैट द कंटेंशन ऑफ द डायरेक्टर्स इज इनकरेक्ट, या ऐसा कुछ भी जो भी हमारा रहता है. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर केस लॉस. शॉर्ट रखना है, क्रिस्प रखना है, यू डोंट हैव टू इलेबोरेट इट एट ऑल, राइट. सिर्फ 2 पैराग्राफ्स में, बट एवरीथिंग हैज टू बी इन पॉइंट. जब आप पैराग्राफ चेंज करते हो तो व्हाट यू कैन डू इज बीच में से तो कहीं से शुरू करेंगे नहीं आप, एक एंटर और दबाओ, देयर शुड बी सम स्पेस बिटवीन द 2. एंड टाइम लिमिट, वो वर्ड लिमिट वगैरह की चिंता नहीं करना, यू विल हैव एम्पल ऑफ थिंग. उतना लिखने का आपका वो होगा भी नहीं, उतना लिख ही नहीं पाओगे एक क्वेश्चन में आंसर में. सो जितना हो सके मेंटेन द स्पीड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. And if you happen to complete the paper a little early, please don't be overconfident. Take time to review the same. You can go back to the questions and check it, right? Review it. So make yourself comfortable. एकदम panic नहीं करना है, आराम से सारी चीज़ें देखो, read the instructions and everything and follow it, right? तो I hope just it turns out to be good. चलो. Pavan, I am going to share that list, right? I think I have told you this already. 60 प्लस तो आराम से आएगा यार, 60 प्लस कोई टारगेट ही नहीं है, टारगेट 80 प्लस आएगा ही आएगा. चलो, पावर बूस्टर सेशन, आई एम ग्लैड इट हेल्प्ड. ओके एवरीवन, आई एम एंडिंग दिस लाइव सेशन नाउ, नहीं तो हमारी बातें कभी खत्म नहीं होंगी, बट यू हैव टू फोकस. सो गो हैव योर लंच एंड देन बहुत हेवी लंच नहीं करना है कि ऐसे एकदम लंच खाए और फिर आराम से सोया कि अभी तो 2 घंटे मैम के साथ पढ़ के आए, नहीं. Have your lunch, take a break off or take a nap of 10 minutes if that suits you. Because अगर मैं सोने चाहती हूँ तो मैं 2-3 घंटे से पहले फिर उठती नहीं हूँ, तो मेरे लिए power naps they don't exist in my dictionary. If they exist in yours, then take a nap of 10 minutes and then एकदम अच्छे से धुआंधार पढ़ाई करनी है, right? चलो. So we end the session here itself. Thank you for being such lovely students. Bye everyone, all the best. Mm-hmm.